Webinar on FAO Seed Treaty, understanding FAO Seed Treaty. So we will just wait for some more minutes for the participants to join, and then we'll start. Thank you. We will just wait for 1 or 2 minutes, and then we'll start the webinar on Madhya Pradesh. And I also do farming, and I'm conserving several varieties of rice and millets. And I'm part of the Bharat Beej Swaraj Manch, which is India Seed Sovereignty Alliance, which is a pan-India alliance of seed savers, farmers, and other organizations working for the cause of conserving seeds in India. I am also part of ASHA, Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture, and this program is being organized jointly by BBSM, that is Bharat Beej Swaraj Manch, ASHA, and Save Our Rice campaign, which actually ran six rice conservation program in 6-7 states of India, and LVC La Via Campesina and Third World Network. So this webinar is basically focused on understanding the FAO Seed Treaty and its implications for India and the farmers and our seed conservation work. FAO Seed Treaty is actually, the full form is International Treaty for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and this is ITPGRFA in short, and this was signed in 2004. And India is also the signatory and party to this treaty, and it is legally binding. So whatever is agreed upon in that treaty, the member countries and other organizations have to abide by that. Uh, Otherwise, the other countries or governing board can take some action, so they can push for that work which needs to be done. So that is the implication of it. So whatever is written or decided in that, we have to abide by it. And it was signed in 2004, and we were also not aware for a very long time what are its implications, almost 21 years now. But gradually we began to understand that there are some very serious implications of what has already been decided in the treaty. And I will just briefly tell you about, and then we have two expert speakers, Nitin from Third World Network and Tanmay from Lavaya Campesina, who will elaborate on it. So this treaty, it has different provisions, but there is the most important thing which we are looking at is the Annex 1 crop. So there is a kind of an annex here where they have listed down 64 crops, 64 crops and forages, I mean the fodder grasses. So those crops and fodder grasses, that includes pad rice, wheat, and maize, and your several pulses, oil seeds, even coconut, and brinjal, and all these things. And there are different grasses also. So all this is part of the Annex 1, which is accessible globally to all countries and all other organizations like the CGIAR institutions, which are like the ICRISAT and other big UN agencies, and they are accessible for sharing. So, and somebody can demand those seeds or those planting materials, and they can get it through a material transfer agreement. And there are no other requirements, like anybody can apply, even you can apply, and you can ask for the particular varieties, the accession number, and certain details you have to give, and then the agency would share with you the seeds after signing a material transfer agreement.
which is called SMTA, Standard Material Transfer Agreement. And this one has a lot of clauses. So in that you can write a lot of things, what can be done or not done. But even then, many countries have rigorous MTA, some countries may not have. It depends on the two parties, like the person who is asking and the person who is giving. The treaty does not go too much into details of what all can be part of MTA. So this is how our seeds are going out of the country to different organizations, corporates, and anybody who can ask about it. And so there are 64 such crops across the world which are already under Annex 1. And I have told you some of the crops. Out of that, India has put 26,000 plus varieties under this system. So India has about 4,69,320 accessions in the National Board of Plant Genetic Resources. So this is our national gene bank. So all the seeds and planting materials which have been collected from farmers from 1940s onwards, they have been put there. There are different centers across India, and they have been put there, and they are available for access to scientists and other corporations. Out of that, 26,000 varieties are available under this seed treaty for 9 crops, and those 9 crops include rice, it includes wheat, it includes sorghum, it includes bajra, it includes chana, arhar, masoor, these types of crops. So all that is already under our system, which is called the multilateral system, MLS. So under this system, if some individual asks for some seeds, we are obliged to give them with a material transfer agreement. So this one is problematic because we don't know what is being written in the material transfer agreement, who is accessing, who is asking, what are their relationships, what are their conditions. All this is not shared publicly. Even the FAO does not know about it, even though the FAO is the organization who is basically the treaty is in its name, but they have no mechanism to track down all these things. It depends on the two parties who are interacting. And the most disturbing or most dangerous thing is that even the sequences, like we know that the plants have their genomic sequences. So just like human genome, the rice has its own genome, the maize has its own genome. So those sequencing of those genomes have been continuously done for several decades. And moment a scientist or agency does that, they upload it in different databases in the world. So these are different kind of databases where the sequences are uploaded. Most of them are American or European, and then anybody can access them. You can also access them if you know about that. You can also access those sequences, and by studying those sequences, the organizations or scientists, they can find out some traits, like we have very good type of rices which are drought tolerant or flood tolerant or submergence tolerant or having high iron or some disease tolerance or whatever. So they can find out those things from the sequences, and they can synthesize those sequences. It is possible to artificially synthesize those segments of DNA in the lab. They can mark out which sequences are suppose tolerant to some insect, and they can synthesize in the lab, and by synthesizing that they can patent it. They can take out products out of it, they can insert it into other crops through gene editing, and then whatever comes out, that also they can patent. I mean, all so many types of things is possible once you have the sequence information. This is the digital sequence information, where you don't even need the seeds. So we are concerned that okay, they are taking our seeds and planting material, and what kind of agreements they're making, we don't know. But in this case, they don't even need your seeds, they just need the sequences which are anyway uploaded
on those databases, and then they can artificially synthesize the segments of DNA or RNA or whatever is needed, and then they can do different types of things with it. Like now we have the gene edited rice. Then there are several crops which are getting edited now. There is talk about gene edited wheat also. Gene edited tomato is there, soya is there. So there is like so many possibilities which can be done, and all these are being done without any knowledge of the farmers, the custodian farmers who had been conserving it for decades and thousands of years. They don't even know, because they were given to the scientists and agriculture department in the from 1940s. So at that time, 1940s, 50s, 60s, 70s, even now, people just go to the village, give me this seed, that seed. The farmers are lovingly giving it. They don't know all these things about patents and the digital sequence information, and what kind of things are going on. And all those accumulated seeds, which are about 4.69 lakh varieties, are stored in our national gene bank. And then the global north countries like US or European Union, they can ask our national gene bank to give us those seeds, because out of the 64 crops, if it is under the 64 crop list, then those countries or those agencies can ask, and we are obliged to give, because we have signed, we are party to the treaty. We cannot say no. Maybe if even if we say no, they may pressurize us, they may penalize us, because we have agreed to do it. And it's not that only they can ask, we can also ask, and we have asked, and we are also accessing their I mean plant seeds, everything. But what the conditions, we don't know. And as we know, the more diversity, South America, all these countries have more diversity, more rich traits, and all these things are available, which the global north is looking for. And they have different ways and mechanisms to achieve it. While our institutions, our research, our things are not up to that level. We don't even understand. Like I was just talking about digital sequence information. Very few people understand all these things, what is going on. So the north is much more equipped to take advantage of the situation, and it is fairly very much in their control. So that is the present situation, and I think Nitin and Tanmay will talk about it. As we know that northeast, this program is specifically for northeast because of the very high biodiversity in the region. So there are more than 8,000 flowering plants, 825 types of orchids, 80 types of rhododendron, 60 types of bamboo, and there are some 2,500 species which are endemic to northeastern India, which is not found anywhere in India. So if we lose them, they are like gone. So out of the 315 flowering plants, 200 are found there. Almost 50% of India's flora is in northeast, and we have so many types of rices. So in the 60s and 70s, when rices were being collected, so more than 6,600 varieties of rices were collected, which is part of the Assam rice collection. At that time, Assam included Arunachal, Mizoram, and Nagaland, and Meghalaya. All these countries, I mean, sorry, the states were included in Assam. So the Assam rice collection is basically of the entire region. And then you have the Manipur rice collection, which has almost 900 varieties. uh, so they have collected huge amounts, and if you look at the 26,000 varieties which are already under MLS by India government has put that up, put the list up, and FAO has put it in its site. You will see most of the varieties, it is written ARC. There are pages and pages of ARC, which is all the Assam rice collection. So they are already being shared, and who is accessing what they are doing, we have no information.
And when the company takes all this, they keep on telling, no, we have not yet developed any product, we have not developed anything, it is under development. So you can't get any information, and they just can just get away with it. And many people talk about benefit sharing. That is the most important thing which is discussed. So far in the world, 66 lakh varieties have been shared to 25,000 users, and only 5 or 6 of them have actually deposited something in the name of benefit, and that is in the benefit sharing fund of FAO. So FAO manages it. There is a benefit sharing fund, and I think some 7-8 lakh dollars have been deposited in that in the last so many 20 years by 5 or 6 organizations, and that is all that is in the name of benefits. And it is a common fund, it is not given to some farmer in Meghalaya, okay, because of this seed you get like that. Not like that, it's a common global fund. And this one, because it's a common fund, so it's up to the FAO to decide what is to be done with it. So that is the kind of situation that we talk about. Benefits. So what kind of benefits we are getting? Actually, no benefits. We are giving everything, but there is no benefits. We don't even know what they are doing. There is one very good example in Africa where they have the University of California has patented a gene sequence from a wild rice, the Oryza longistaminata. This is a wild rice which grows in sub-Saharan Africa, from which the African rice evolved. And University of California at Davis has patented a part of that gene. And after patenting, they created a benefit sharing fund. And what was there in that? It was for PhDs to some, I mean, people from that community who were growing that rice. And there is nobody such person who can do a PhD in University of California. And even if they do, it will not serve any of their purpose. In fact, it will probably bring in modern seeds and chemicals and all that, which might, in fact, make their agriculture more unsustainable. So in the name of benefit sharing, there is no idea, there is no innovation, innovative thinking. They are just offering something, and even that, the last I had read, they had not even received the funds. So that is what is going on in India. Also, there is a rice from Kerala, class of rice from Kerala, Kodian, whose sequences have been patented. Means the ERI, International Rice Research Institute, had tried to patent it, but they abandoned it because they didn't find interest in the anybody very interested in that. So they abandoned it. But the very fact that they patented it, and they might be patenting more such things. They have patented one more gene sequence from another rice in Indonesia. So these things are going on. That is the things which we know. And then we have so many other things which we don't know. So that is the kind of scenario we are. And now the biggest threat is that in November there is a meeting of the governing board of this ITPGRFA, that is the seed treaty. And they, because the global north is still, they are so greedy, they are not satisfied with 64 crops. They want the whole of biodiversity put under Annex 1. Everything, all your medicinal plants, bamboo, anything wild, whatever, means whatever is known, they have, I think, put a figure of 350,000. So from 64 they want to expand it to 3.5 lakh varieties. To They want to put it under Annex 1. So once that is done, then all your things in the forest, in your agricultural field, everything will be accessible to the to different countries and to corporations, and even maybe whatever their sequences, everything will be available, and they can profit from it. So we need to, for the 64 crops, it's already done. So we can maybe
protest about it or try to change it, but it may be difficult because it's already done and 20 years have passed. We have to be vigilant what kind of varieties are being shared, what is their material transfer agreement, who is doing what, whether the sequence information is available or not, that we can do. But for the other crops, the crops which are not still part of your annex 1, like chili is not part of it, cotton is not part of it, bamboo is not a part of it, turmeric is not part of it. So can we stop that? Can we stop their interest of expanding annex 1? We can say that we are not satisfied with whatever was done in annex 1 with these 64 crops. So why should we expand it? We should try to oppose it. So that is the contentious issue now, that in November the board is meeting, and before that we have to do something. And this meeting is not happening in India; it's happening very far away in Peru, in South America, and most of us will not be participating in it, and very few organizations will be going there. And even if you go, whether you can do anything, all those questions come. So we have to really campaign very hard. We have to talk with our political representatives, with our community people. We have to write letters and campaign that we don't want this expansion. In fact, we want what has already happened with the 64 crops. We want to know that first, and we want to know where are the loopholes. We want to plug those loopholes rather than open everything out. And then people say that we have the PPVFRA, we have Biodiversity Act. Those things are not going to save. Those things are our national laws, and they don't have the. Uh, I mean, they are there, but the thing is that because this is an international treaty, legally binding, and lot of things are written, but there is no mechanism to implement it. We can say that we want to do this, we don't want to share, we want information, we want tracking, we want traceability, but we don't have mechanisms in place. How do we do it? So there might be a lot of acts and policies, but how it's not implemented properly. FAO is not doing its job, and so there are a lot of problems which Nitin and Tanmay will talk about. So I will just stop here. Maybe I'll just tell you in Hindi. तो सभी को नमस्ते। मेरा नाम शौमिक है, मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, और मैं थोड़ा खेती भी करता हूँ, और धान और मिलेट्स इनका संरक्षण कर रहा हूँ, और किसानों के साथ मिलके बीज बचाओ और बीज संरक्षण के ऊपर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं भारत बीज स्वराज मंच का मेंबर हूँ, जो कि पूरे भारत में अलग अलग जगह के जो किसान है, जो बीज संरक्षण का काम कर रहे, उनका एक संगठन है। और मैं आशा का भी मेंबर हूँ, अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर। और ये जो वेबिनार है, ये 5 संस्थाओं ने मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भारत बीज स्वराज मंच, आशा, सेव आवर राइस कैंपेन, लावाया कैंपेसिना और थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क। तो इस वेबिनार में हम लोग जो अंतरराष्ट्रीय बीज कानून बना है, बीज समझौता बना है 2004 में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कानून 2004 में बना था, और इसमें बहुत सारे पहलू है, बहुत सारे चीजें, बीज और उनका माने कैसे उसका उपलब्धता होगा, कैसे क्या नियम बनेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु है। उसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए जरूरी है, वो है ये एनेक्स 1। एक मतलब एक डॉक्यूमेंट है उस समझौता में, जिसमें 64 फसल का लिस्ट है। 64 फसल, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, अरहर, चना, इसके बाद ज्वार, बाजरा, बैगन, नारियल, इस तरह के बहुत सारे हैं। और कुछ ये भी है, मतलब घास भी है, जैसे जो चारा गाह के जो घास है, वो सब के पेड़ों के बारे में भी है। इस तरह 64 है। तो ये 64 जो फसल है, ये एनेक्स 1
फसल कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश, कोई भी देश सिर्फ नहीं, माने कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई संस्था, ये लोग अगर उसको, उसकी बीज को मांगते, बीज या उसका कंद या जो भी हो, उसको मांगते, तो हम लोग को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने समझौता पे साइन किया है। तो वो हम मना नहीं कर सकते। अगर मना करेंगे तो फिर वो लोग कुछ कुछ बात उठा सकते हैं कि क्यों आप मना कर रहे, जब आप इस पे एग्री हुए थे। तो अब जब देना है तो फिर कैसे देंगे? तो एक एग्रीमेंट होता है, मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट बोलते, उसमें लिखा रहता है, शर्तें लिखे रहते कि कैसे कैसे, मतलब इसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसके ऊपर पेटेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, निजीकरण हो सकता है कि नहीं, क्या नियम बनेंगे, और उसमें उससे क्या फायदा मिलेगा देने वाले को, ये सारे उसमें एग्रीमेंट में लिखे रहते हैं। अब हमें नहीं पता क्या क्या एग्रीमेंट में लिख के, ऑलरेडी जो इतना सारा शेयर हो रहा है उसमें क्या बातचीत हुई है, किसी को कुछ पता नहीं है। और दूसरी बात है कि कई चीजें लिखी भी होती है, लेकिन वो उसको मतलब कार्यरत करना मुश्किल होता है। हम लोग लिखने को तो लिख देंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल करने का टाइम होता है तो फिर वो देखा जाता है हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, उनके पास कैपेसिटी नहीं है, या वो ऐसे ही भाग गए, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, वो दूसरे विदेश में है। तो इस तरह वो कुछ भी बहाना बनाते, नहीं नहीं आपका सीड लेके मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अभी रिसर्च चल रहा है, अभी हो रहा है काम, कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से ये लोग करते हैं, और इस तरह 66 लाख वैरायटीज मतलब ऑलरेडी शेयर किए गए हैं 25,000 लोगों को। और इतना कुछ शेयर करने के बावजूद किसानों को कुछ नहीं मिला है। ऐसे तो हम लोग बहुत बात करते, नहीं किस ये मिलेगा वो मिलेगा, मतलब यहाँ पे 1% देने को भी लोग तैयार नहीं। ये जो बीज इंडस्ट्री है, ये मतलब अरबों खरबों रुपए कमाती है हर साल, उसका 1% भी वो लोग देने को तैयार नहीं। उनको बहुत खराब लगता है कि मैं 1% कैसे आपने मांग लिया, मतलब वहां पे मीटिंग में ऐसे बात होती है कि अरे 1% मतलब तो बहुत बड़ी बात हो गई, 0.001, मतलब इस तरीके से वो भी देंगे या नहीं देंगे, इस पे माने लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और वो जो 0.001 भी जो है, उसका भी कोई मायने नहीं। वो ऐसा नहीं कि आपने कोई बीज दिया तो आपको मिल जाएगा, वो चला जाता है एफएओ के पास, जो पूरे विश्व का एक एजेंसी, उनका एक बेनिफिट शेयरिंग फंड है, वहां जमा होता है। फिर एफएओ का वो जो लोग है, वो लोग सोचते हैं अच्छा इसको कैसे खर्चा करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, माने उसमें आपका कुछ नहीं है। कोई किसान अगर सोच रहे कि मैं दे देता हूँ बीज और फिर मेरे को बहुत उसके लिए मतलब फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैदर हो सकता है कि आपको घाटा हो, क्योंकि वो जब आपको कोई उसी बीज से कोई कुछ निकाल के आपको उसका हाइब्रिड या कुछ जीन एडिटेड बना के भेजेंगे, फिर आपसे वो पैसे लेंगे। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे। और ये 64 फसलों को लेके ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि चलो 64 फसलों में तो हम ऐसे कर रहे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। अभी वो चाहते हैं कि जो कुछ भी है दुनिया में, जितनी भी पौधे हैं, चाहे वो जंगल का कोई घास ही क्यों ना हो, लता ही क्यों ना हो, कोई औषधि पेड़ हो, कोई कांदा हो, कुछ भी हो, माने टोटल जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ भी किसी दस्तावेज में है, किसी जीन बैंक में रखी हुई है, और इस तरह के बहुत सारे हैं। अभी देखिए हमारा जो नेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस है, वहां पे 4,69,320 तरह के बीज रखे हुए हैं। उसमें से 15,982 ऐसे बीज है जो कि फूल है, फल है, औषधि पेड़ है, ऑर्नामेंटल पेड़ है, मसाले है, एग्रो फॉरेस्ट्री के स्पीसीज है, इस तरह की चीजें हैं। ये सिर्फ धान, गेहूं, मक्का, चना इसकी बात नहीं हो रही है, ये सब चीजें भी वहां पे है। अभी मैं देख रहा था 332 प्रकार के नारियल है, और 125 प्रकार का बांस है, ये सब भी उसका हिस्सा है। 12,790 प्रकार के ऐसे जंगल की चीजें हैं जो इन्होंने क्रायो प्रिजर्वेशन में रखा है। तो इस तरह हर चीज वो अवेलेबल हो जाएगी। तो अवेलेबल हो जाने का क्या मतलब है? मतलब वो कोई भी उससे कुछ भी निकाल के कुछ भी बना सकते हैं और आपको पता नहीं चलेगा। वो जरूरी नहीं कि वो आपको बताए,
या वो कुछ ना कुछ उसका अलग तरीके से उसको बेस करेंगे कि नहीं नहीं आपका बीज से नहीं, हम तो इधर दूसरे कहीं से कुछ मिल गया, ऐसे आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है उसको चैलेंज करने का। बहुत कम चांसेस है, मतलब बहुत उसके अंदर बहुत पीछे लगना पड़ेगा तब शायद हो सकता है, उसमें भी बहुत डाउट है। अभी कुछ कुछ अफ्रीका के देश में जंगली धान का यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने सीक्वेंस पेटेंट कर लिया। पेटेंट करने के बाद उन्हें लगा कि चलो वहाँ के समुदाय को कुछ बेनिफिट मिलनी चाहिए, तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि हाँ हम पीएचडी ऑफर करते हैं। अब वो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जाके क्या पीएचडी करेंगे और उससे क्या फायदा होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस तरह की चीजें ये कर रहे जिसका कोई मतलब कोई तुक नहीं बनती है। तो अब वो चाहते हैं कि ये 64 फसल को, लाखों लाख फसल जो पूरी हमारी जैव विविधता है, हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, बायोडाइवर्सिटी की कोई मतलब ही नहीं रह जाएगी। सारा चीज वो चाहते हैं कि उनके हवाले हो जाए, वो उसको लेके कुछ भी कर सके। और ये चीज होने का चांसेस है क्योंकि नवंबर में इसके ऊपर एक बैठक होगी, पेरू जो कि साउथ अमेरिका में है, वहां पे इसकी बैठक होगी, वहां पे इसके ऊपर बात होगी कि हम लोग क्या 64 फसलों को बढ़ा के टोटल जैव विविधता को अपने उसमें डाल दे। तो इसको लेके आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? अब बाकी सारे देशों को तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और उन लोग एक्चुअली कैसे इसको देख रहे हैं, पूरी दुनिया में हर चीज शेयर होगी, हम उनसे लेंगे वो हमसे लेंगे, जैसे किसानों के समुदाय में होता है, कोई किसान किसी को देता है, कोई किसी से लेता है। इस तरह एक सामंजस्य एक एक सोसाइटी में ऐसे होता था पहले, अभी भी होती है। अब वो वर्ल्ड में भी ऐसे चाहते हैं, लेकिन इस तरह से एक्चुअली माने लिखा ऐसा जाता है, लेकिन प्रकृत रूप से इस तरह से होता नहीं। उसमें जो बड़े बड़े देश होते हैं, अमेरिका होते, यूरोप होते, ये मनमानी करने लग जाते हैं। इनके पास ऐसे ऐसे टेक्निक से और ऐसे ये अलग अलग तरह से प्रेशर देते हैं, जिसके वजह से जो अफ्रीका के देश है, साउथ अमेरिका के देश है, एशिया के देश है, ये इनसे लड़ नहीं पाते। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाते उनके सामने। तो वो कई बार उनका बताया हुआ चीजों पे मान लेते, उनके मार्ग में चलने लग जाते। तो हम लोगों को एकत्रित होके इन चीजों को क्या करना चाहिए, मतलब हम लोग इसको चाहते हैं या नहीं चाहते? अगर हम इसको रोकना चाहते तो कैसे रोकेंगे? ये इतने बड़े बड़े मीटिंग में हमें तो कोई नहीं बुलाएगा, बुलाएगा भी तो बोलने का मौका नहीं देगा। तो क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं, कैसे हम अपने धरोहरों को मेंटेन कर सकते हैं, इसी के बारे में अभी बात होगी। तो मैं अपने आप को विराम देता हूँ, धन्यवाद। अभी मैं नितिन जी को आमंत्रण करता हूँ, वो अपना इस अंतर्राष्ट्रीय बीज कानून के बारे में बताए, समझौता के बारे में बताए। और वो क्योंकि हिंदी में उतने सक्षम नहीं है तो अंग्रेजी में बोलेंगे, बाद में हम लोग थोड़ा सा उसको हिंदी में भी बताएंगे। तो धन्यवाद। नितिन, यू कैन स्टार्ट। Uh, धन्यवाद, थैंक यू You सौमिक जी. you try little bit Hindi also if No, you can. Yeah, yeah. I'm from Kerala. Somehow, my my Hindi is not so good. Um, Let me go to the presentation. I will do a very short presentation in a very slow manner. Perhaps I'll give time to Saumik ji or Tanmay to perhaps uh, you know, discuss in a slide by slide manner. I think I am not actually telling much more than what Saumik ji has already said here. I'm only trying to put it into an order so that we understand it in a systematic manner. I'm not actually going a lot into the text of the treaty negotiations or technicalities involved in the process. I'm not going into all these issues, very simply understanding what is happening and how we can navigate forward. This is the idea. And first and foremost, before we proceed, I really want to say that, there are so many people around us who will come and tell us everything is already done. Nobody will listen to us. No government will listen to us. Whatever we have shared is already gone. Even if you don't want to share, it is already in the form of sequence data available in databases. So there is no point in, asking for anything good like that. Give it up. These kind of
people are around a lot around in our world. Let us not, get panic by such arguments coming from different parts of the country, different parts of the people or the world. We have to understand that there is value of our contributions, and that value has to be demanded properly. We can always identify our friends, because it is not a one country like India, UK negotiation of a free trade agreement. It is a multilateral negotiations where more than 154 countries are participating. So in Peru, there are around 154 countries participating. We can find some of the governments aligned with us, and through them we can always make some better pushback onto some of these bad proposals, and also try to set up some things in the correct direction. Just want to tell you something, that even though, like for example, when the all these things began in 1990s and 2000s, like the agreement and the treaty, what has happened is that many scientists come and try to say, like once the seed is taken, everything is done. Like they just want the seed, and then they don't want the farmer. They alienate the seed and the farmer, and then think that they can do everything with the seed. But they always had to come back to the farmer to understand the traditional knowledge with the farmers, and the understanding of how the seed has been interacting with the soil, interacting with the environment. And that information was very much required for them to do further research. But they never tell that is important. They said, okay, you give the seed and then just, take away the value from us. Similarly, now what is happening is people taking the sequence information and like completely forgetting that there is value in the seed and the seed's relationship with the soil and the climate. We don't have to worry, because every time when we sow seeds, every time when we, save seeds, every time when we do farming and cultivation, we ourselves are contributing to genetic diversity, and it is this diversity what they want. So we have this diversity, we have this knowledge associated with diversity. So that is ever growing. It will never stop. It is not, something very sticky. So we have our values, we have our contribution, our knowledge is growing, our seeds are growing. So we have to ask for clear, respect of our contribution, and move forward. Um, I will make the presentation in around 7 parts. I will give you in a very short nutshell what this idea of access and benefit sharing means first. And then I will talk to you regarding 2 international treaties. One is Convention on Biological Diversity, and the other is the Seed Treaty and Plant Treaty, which we are discussing now. So we will understand what is the difference between these 2 treaties, and understand how this particular treaty is affecting us. Then I will move on to this idea of multilateral system. Short form is called as MLS. How that MLS currently functioning, what are its problems, and what are its, how it is operating. Then I will go to proposals currently, which will be placed in the Peru meeting in November. What sort of proposals are there to improve or enhance the functioning of MLS? I would call so-called enhancement of functioning of MLS, because we don't see these proposals actually enhancing the functioning of the multilateral system. Then we will specifically look at a proposal to expand Annex 1, which is expanding the crops from 64 crops to all plants as such. And we will see what are its little bit nuances and technicalities. After which we will also discuss how the working group, who actually proposing these new proposals or new changes to the treaty to the Peru meeting, how did they work? And whether they actually take into account any implications for farmers' rights, whether their process was neutral or unbiased and objective. All these things we can discuss. And then I might suggest 1 or 2 demands which farmers of India may consider for their subsequent actions.
If you like it, you can pick it up. Otherwise, you can devise your own course of action here going forward. Saumikji, would you like to explain this part? ओके, तो हाँ, तो नितिन जी केरला से है, तो उनको थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है। तो वो बता रहे कि हाँ, हमने शुरू में जैसा बताया तो शायद बहुत लोगों को लगा कि अभी और कुछ कर नहीं सकते, 64 फसल तो चले ही गए, सीक्वेंसेस भी है, तो अभी क्या कर सकते हैं, और मीटिंग सब इतनी दूर दूर हो रही है, हम लोग कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इनका कहना है नहीं, अभी बहुत कुछ हम कर सकते हैं, और ऐसा है कि ये प्रोसेस जो है, ये कभी ऐसा नहीं कि ये एक जगह रुका हुआ है, क्योंकि आखिर उन लोग को सीक्वेंस मिल भी गया, बीज मिल भी गया, लेकिन जो उसका साथ जो जुड़ा हुआ ज्ञान है, उसको कैसे लगाना है, कैसे जमीन पे लगाना है, कैसे मिट्टी पे लगाना है, किस तरह के मौसम होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्या तरीके हैं, उससे क्या क्या हम बना सकते हैं, ये सारा जो नॉलेज है, जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, पारंपरिक ज्ञान, वो अभी तक उपलब्ध नहीं है उनको, उनके पास सिर्फ बीज और सीक्वेंस है। तो वो चीज के लिए उनको फिर किसानों के पास वापस आना पड़ेगा, तो किसान फिर तब अपना जो अधिकार है, हक, उसको जाहिर कर सकते हैं कि नहीं, आप तो ऐसे लेके चले गए थे, अभी आप फिर आ रहे और ये सब पूछ रहे। तो ये सारा चीज है। और दूसरी बात है कि ये सब डायनामिकली इवॉल्व करता है। अभी देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये कभी ज्यादा बारिश, कम बारिश, कभी साइक्लोन आ गया, कभी मतलब कोई कीट आ गया, बीमारी आ गया, उन सब से पौधा लड़ते रहता है, पौधा उसको समझता है, लड़ता है, उसके उसके ऊपर उपाय निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सब कोई फ्रोजन नहीं है, जैसे वो जो जीन बैंक में रखा हुआ है, जो 1970s में आपके फील्ड से लेके गए, तो वो उनके वहां, वो तो ठंड में वो एक तरह से एक पड़ा हुआ है, उसको बाहर का दुनिया में जो पिछले 50 साल में क्या क्या चेंजेस, उस बीज को कुछ नहीं पता है। तो लेकिन आपके फील्ड में जो है, हर साल उस बीज को, उस वैरायटी को पता चल रहा है। तो ये एक डायनामिक, मतलब एक चलती हुई तरीका है, ये रुकने वाली स्थिति नहीं है। तो हो सकता है उनके पास बीज और सीक्वेंस चले जाए, लेकिन हमारे पास जो है वो अनमोल है, उसकी एक अलग वैल्यू है, और उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसकी समान हमें मिलनी चाहिए, ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के बारे में वो शॉर्ट में बताएंगे, जो कि मेनली सीबीडी और आईटीपीजीआरएफए है, जो अंतरराष्ट्रीय बीज समझौता है, और जैव विविधता का जो कन्वेंशन है, इन दोनों का बारे में क्या अंतर है, क्या है, ये सब बताएंगे। और ये मल्टीलैटरल सिस्टम जिसके बारे में मैं बता रहा था कि बीज इधर से उधर चले जाते, उनके बीज हम भी ले सकते, वो भी हमारे ले सकते, उसका क्या सिस्टम है, कैसे चल रहा है, वो उसके बारे में भी बताएंगे। और ये जो एक्सपेंशन करने की बात हो रही है कि अभी 64 फसल है, उसको बढ़ा के पूरी जैव विविधता को अपने अंदर ले ले, ऐसी जो बातें चल रही है, वो क्या बात हो रही है, उसमें कैसे बातचीत हो रही है, वर्किंग ग्रुप है इसके, वो लोग कैसे कर रहे हैं, ये सारा चीज, ये प्रोसेस के बारे में वो बताएंगे, क्योंकि वो ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं। हम लोग तो नहीं गए हैं, लेकिन नितिन अभी पेरू में गए थे, तो उनको ये सारा प्रोसेस मालूम है, कैसा क्या चल रहा है अंदर में। और इसके साथ जुड़ा हुआ है कि डिमांड हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्या, कैसे हम, जो बात आ रही है कि ऐसी स्थिति तो है, अभी क्या कर सकते, कैसे हम डिमांड रखेंगे, क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में वो बताएंगे। धन्यवाद। Thank you, Samik ji. Uh, this slide is there for when I share the slides, you can actually see the words used. What does this ABS means? CBD means just abbreviations of all the terms. While discussing, I will explain. So ABS in short, the first thing, like uh, sharing of genetic resources, that is biological resources capable of producing certain traits and characteristics. So generally, a seed is a genetic resource because a seed can actually propagate the new generation, and in propagating new generation, it can definitely transfer traits and characteristics. So any biological material having this kind of ability to propagate and as or transfer certain traits and characteristic, that is considered as genetic resource.
and sharing of that for the purpose of research and development, not like like we are selling apples for as commodity, as food, not like that. The if we give an apple for the research and development, that process. So that sharing of genetic resources for research and development is generally what considered in access. Then after that research and development, outcomes come. Those outcomes are identified as benefits, and that benefits have to be fairly and equitably shared with the providers. Now, fairly and equitably is a very broad term. It does not have real very specific definition, but it means it should be really really helpful and meaningful for the providers. So if a farmer is giving a particular seed to a researcher for doing some research, and that researcher is developing further knowledge, further information about the seed, that knowledge has to be shared back with the farmer. If that knowledge is being published or is also being used for further scientific purposes, he has to recognize that this particular farmer has given this particular seed, this particular farmer has kind of or the community has actually contributed to the development of the seeds. Similarly, if he has kind of developed a new variety or something, he has to consult with the farmer how this new variety is, whether it is good or not, whether it should be allowed to further sowing or not. These kind of interaction chalte rehte hai. Like you have to actually engage farmers in that process and share those outcomes in a way which is helpful to the providers. So that is called as benefit sharing. So this access and benefit sharing together is called as access and benefit sharing, ABS in short form. People understand it as ABS. So multilateral system of ABS under Seed Treaty is the major subject matter which we are going to discuss today. Now, what we have to understand in these two aspects very critically is that access, that is sharing of the genetic resource, sharing of the seeds, has to be based on the prior informed consent of the national authorities as well as the local communities developed such resources. So if India is sharing a particular seed variety of any particular crop from Northeast, then the Northeastern communities as well as India government authority has to have a clear understanding that this particular seed is being given to this particular researcher or university or breeder or whoever it is for research and development. And this research and development is not for these purposes, but only for some of other purposes. Like for example, if we consider a particular variety, particular type of research is harmful for future, then we don't allow that kind of a research. So it is basically the community and the country government giving this particular seed varieties or genetic resources. They have to decide what are the conditions under which terms and under which this seed is shared and what sort of research the researcher can do. Then comes benefit sharing. As I said earlier, it has to be fair, meaningful, equitable to the provider. Like, for example, the best case example you can think about is that if um, um, if a particular medicinal plant from India is useful to, let's say, develop a medicine for cancer, and a US company develops that particular medicine and then tells, okay, let the Indians buy it. We are giving it for an affordable price. We are not charging high price for Indians. That is not fair and equitable, right? Because it is, if there are countries in India, I mean, if population in India who cannot even purchase that, affordable price, so there needs to be some product of that medicine has to be given to the government for free of charge. Or there might be some companies in India who would be able to produce this medicine for a better price and betterly reaching out people. So give that to the one license for that company to produce. That also is a part of benefit sharing. So several types of
benefit sharing can be done looking upon the each system or scenario. Samikji or Tanmay, would you like to explain something? I move forward. Hello. हिंदी में अगर यानी शॉर्ट में कर सकते हैं कि जैसे नितिन बता रहे थे कि ये जो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी क्या है, ये जो सिस्टम है मल्टीलैटरल सिस्टम, तो इसमें सारे जो ये है सीड जो नेशनल जीन बैंक है और नेशनल जीन बैंक्स और इंटरनेशनल जीन बैंक्स है, उसमें के जो बीज है वो कोई भी इंटरनेशनली या नेशनली एक्सेस कर सकता है। और ये जब इसमें से वो लेते हैं बीज उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए, तो वो जो रिसर्च करेंगे उसमें से कुछ नई नस्ल पैदा करेंगे जिससे सही में कोई फायदा होगा उनको, तो वो जो फायदा है उसमें का एक हिस्सा लोगों को पहुंचाएंगे। तो ये बेसिकली इसमें का कुल जो बेसिक ढांचा है वो ये है कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी क्या होता है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जब कोई भी चीज़ को अगर लिया जाता है, तो कोई भी बीज अगर कोई लिया है, तो इसके लिए जो वहाँ के जो स्थानीय समूह है, तो उनके लिए उनका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और जो बेनिफिट जो आता है वो जो है वो सब में एक न्याय एक न्यायपूर्ण तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये एक बेसिकली एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी कैसा काम करता है, इस बारे में नितिन बता रहे हैं। Thank you, Tanmay. So basically, this is it. Like benefit can be several things, and it can be shared equally when we share the genetic resources. Now let's see two international agreements, two international treaties dealing with the same subject, but in a slightly specific manner. One is Convention on Biological Diversity. Now, this convention deals with ABS in general. It can be like any seed, any plant, any animal resources, anything non-human, but biological resources can be shared based on the laws created under Convention on Biological Diversity. Now, according to this particular treaty, every country has got sovereignty over these genetic resources. Full Paramadhigar is there on all these genetic resources. So the country, the government can decide who should get access and under what conditions they should perform research, etc. So it is very important that the treaty says you should give this access for environmentally sound research and development. You cannot just give it to all research and development process. You can only you generally need to promote it for environmentally sound purposes. Now, it is also in this treaty, not only the country and the government, but also indigenous peoples and local communities, their rights also has been recognized. If they are the ones who have developed these seeds or developed these genetic resources, their informed consent is important. Their conditions are also need to be taken into account. So it is not free for the government to share. It's also not for free for anybody to take it. It has to be based on the terms and conditions developed by national authorities as well as communities, local communities also. So in the CBD context, India has a law called Biodiversity Act. Under Biodiversity Act, if somebody wants a researcher, let's say a researcher from Europe wants access to seed, they apply to national authority, and the national authority send that application all the way through state biodiversity board to the local biodiversity management committee, from where the biodiversity genetic resource is asked. So it will reach up to the panchayat level or at least at the district level. And then from there you make the decision whether this has to be given for research and development. That permission has to be given.
and then the genetic resources shared with the researcher. And benefits from these kind of research, whether it is medicine, technology, knowledge. Sometimes, it's like a perfume or a cosmetic they make. So it is, you don't have like a fair and share on products like cosmetics. It's a perfume, but you get money out of it. It's a luxury product. So a share of that profit can also be considered as benefits. So all these benefits should actually go back through the national authority to the biodiversity management committee, which is at the local level. So this is how the CBD understands what we call as ABS. And intellectual property rights also are kind of subject to negotiations. For example, if India is giving an Indian university is giving access to some seeds or some genetic resource to a foreign university, these both entities towards has to negotiate and decide if a new product is developed out of this particular genetic resource, how intellectual property rights on that product will be shared. Like, for example, a medicine has been invented. Then what happens to that medicine? Who holds IPR rights? Whether the company who did the research from the outside, or whether the participants from India can also have a share in that rights. So, for example, like let us assume that Navara rice is used to produce some medicine. So, as farmers or farming communities of Navara, you already know it's lot of medical qualities. So that information you are sharing with the researcher. So you always have ability to negotiate some intellectual property rights in that case. And one thing we have to keep in mind, generally this genetic resources or biological materials, life forms cannot be patented anywhere. It's only the product or the technology coming out of it will be patented. Now, whether that should also be patented or not is a different question. I'm not getting into it, but at least understand that provider and the researcher can negotiate how this right should be allocated and how it should be exercised. For example, let us assume a medicine has been developed in foreign country. You can say, okay, you take IPR, but you should be giving some licenses to India or our people here to produce it and share it within India's vulnerable population, etc., etc. Like that, you can have a negotiation on the rights on the product and the technology developed. This is how CBD structure or Convention on Biological Diversity works in a nutshell. Now let us take the seed treaty, which Soumik ji was telling, or the subject of today's discussion. Now, in this case, what is happening is that there is no sovereignty to the level you decide how you are sharing this resource. The 64 crops which they have identified, the treaty is telling your government entities that you are obliged, you are obligated to share these seeds or these resources under terms and conditions developed by the governing body of the treaty. So the governing body meeting which was happening in Peru in November, similar previously there was previous governing body happened. So in those governing bodies, there is a set of terms and conditions determined by all these countries. Under those terms and conditions, you are obliged to share these resources. So you don't have the ability which is there in the CBD to determine what sort of conditions, what sort of benefits, what sort of regulations you have to place is not there. You are not even looking into whether the research is for environmentally sound purpose or not. So you are basically obligated to share it under the terms and conditions decided by the treaty governing body. Benefits arising, like what Soumik ji was telling, it goes to a FAO fund. At least money wise, monetary contribution goes to FAO. There is also like new information. There is only two types of benefits coming from this particular understanding of seed treaty. Whoever receives the seed from you give two benefits. One is more information and more knowledge about the seeds, and the other is money from the
seed sales, if they are breeding a new variety and new seeds and they are selling those seeds to farmers or governments, etc., etc., those benefits from that seed sales, that money, some percent of that money should go to the FAO fund, and the information also goes to a database which is developed by FAO. Now, to get this money, some money, if you, for example, as a farmer, you have contributed something and you want some money from this fund, you will have to compete by supplying, project applications and compete with others who are like competing to get money from the fund. It's not guaranteed entitlement to you, like in the case of CBD. It's actually managed by FAO. This is the status of the Seed Treaty. Now let us take a last important aspect, which is the intellectual property rights on the resources. So they are saying in the treaty, when you give the seed, in the form you give, you should not be taking intellectual property rights in a manner it will limit access to such resources. So any breeder can actually interpret this particular provision saying that they can also take intellectual property rights on these resources. Generally don't happen, but still they can still take on these resources in a manner if they do not prevent its further sharing through the treaty. So as long as the seed which they have taken from you is being shared through the treaty, they can take intellectual property rights on the new varieties, on the new products or traits, etc., etc., and keep businesses doing out of it. There is no negotiation or there is no regulation or there is no even prohibiting total prohibition of intellectual property rights on the seeds which you are given. It's a very I would say in a diluted language, it is written in the treaty that intellectual property rights should not be claimed, but you can claim it as long as sharing under the treaty is not stopped or is not reduced. This is the idea of the Seed Treaty. I'll stop here. Anybody wants to explain perhaps? Saumikji, are you there? Tanmay? Yes. Okay. चौमिन आप करोगे? नहीं आप बताइए. ठीक है, तो यहाँ पे नितिन ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं कह पाएंगे क्योंकि जो सीड ट्रीटी है वो उसे एक तरीके से कानून कह सकते हैं, मगर जो सीबीडी है वो लीगली बाइंडिंग नहीं, वो न्याय वो कानूनी तौर से सख्ती नहीं की जा सकती उसकी। तो जैव विविधता की का जो कन्वेंशन है तो और ये सीड ट्रीटी जो है, ये दो चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बीजों के बारे में कुछ बातें करते हैं, जो बीजों के बारे में कुछ कानून बनाते हैं या कुछ सुझाव देते हैं कि अगर बीजों लोगों से, अगर समूहों से, किसानों से अगर और या किसी देश से अगर कुछ किसी बीज को या जैव विविधता को अगर लेना है तो उसके पीछे हमें क्या जिम्मेदारियां हमारी बनती है, हमारी यानी जो लेने वाले हैं, जो रिसर्चर्स है, कोई कंपनी है। तो जो जैव विविधता कन्वेंशन है, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो उसके तहत उनका सीधा कहना है कि ये जो बीज या जैव विविधता से कुछ भी चीज हम लेंगे, अगर कोई भी लेना चाहे तो वो इसी जो पर्यावरणीय सही रूप से उसका इस्तेमाल हो, इसी उद्देश्य से वो लेने चाहिए। उसमें से जो कोई भी फायदा अगर होता है, रिसर्चर आगे जाके रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसमें से कोई कंपनी उसे मार्केट करती है, तो उसमें से जो फायदा होता है वो सही न्यायपूर्ण रूप से वापस से जिनसे वो बीज या उससे जुड़ा कोई भी पारंपरिक ज्ञान जो है, जानकारी है, वो अगर इस्तेमाल होती है तो वो वापस से उसी समूह तक पहुंचनी चाहिए। और इसके जो नियम है कि हम जब वो बीज या जब भी उसका लेन देन होगा उसी समय वो आपस में बात करके उसके नियम
और शर्तें तय कर सकते हैं। वो अधिकार पूर्णतः स्थानीय समूह को दिया गया है और जिस देशों से वो लिया जा रहा है, ये सीबीडी कहता है। फिर सीबीडी में ये भी है कि अगर उसके ऊपर कोई कंपनी आगे जाके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट या कुछ लेना चाहे कि जो कुछ भी प्रोडक्ट बनता है उसमें से, तो उसके ऊपर भी पेटेंट लेने के पहले उसके क्या शर्तें होगी, उससे जुड़ा हुआ फायदा जो है वो किस तरीके से वापस से समूहों को मिलेगा, मूल समूह के पास जाएगा, ये सारी बातचीत हो सकती है। मगर अंतरराष्ट्रीय बीज संधि जो है, इंटरनेशनल सीड ट्रीटी जो है, उसमें अ, जो कंडीशंस है कि किस कंडीशंस, अगर कोई बीज अगर लेना चाहे तो उसे कौन से शर्तें मान्य करनी, कौन से शर्तें लागू होती है, ये पहले ही एक एग्रीमेंट बना हुआ है, उसे स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट कहते हैं, और उसके तहत जो कोई भी शर्तें हैं वो उन्हें लागू होती है। तो कल अगर हमारा कोई बीज अगर सीटीटी के तहत कोई भारतीय कंपनी या बाहर का एक ही कंपनी कोई भी अगर लेना चाहे, तो हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली वो मल्टीलैटरल सिस्टम में अप्लाई करके उसके अंदर जो स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट है उसमें जो शर्तें दिए हैं वो अग्री करके वो ले सकते हैं। इसमें से जो उनको अगर कल जाके फायदा होता है, तो वो जो फायदा है वो उन्हें वापस जो देना है वो वापस से स्थानीय समूहों को नहीं देना है। जिनका वो बीज है, जिनके यहाँ जिस देश से या जिस देश के समूह से वो बीज आया है, उनको वापस वो फायदे का भागीदार नहीं बनाना जरूरी है, मगर ये जो पैसा है वो जाता है जो सीड ट्रीटी का जो बेनिफिट शेयरिंग फंड है, उसका नाम दिया बेनिफिट शेयरिंग फंड, वहां जाता है। और बेनिफिट शेयरिंग फंड का इस्तेमाल कैसे होगा, तो इसके लिए पूरे हर 2 साल में जो उसका गवर्निंग बॉडी होता है उसमें डिस्कशन होता है, उसमें जो जो कोई नियम बनते हैं, प्रोसेसेस बनते हैं, उसके जरिए अलग अलग जो लोग हैं, यानी किसान हो सकते हैं, स्थानीय समूह और कोई हो सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं कि हमें बेनिफिट शेयरिंग फंड के लिए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, और फिर जाके जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट होंगे उन्हें वो पैसा मिलता है। तो इस तरीके से वो बेनिफिट शेयरिंग फंड का काम चलता है। अ, और हाँ, और जो पेटेंट्स की जो भाषा इसमें इस्तेमाल की है, यानी ट्रीटी में कहा गया है कि मल्टीलैटरल सिस्टम में से जो बीज जिस रूप में लिया जाएगा, अ, उस रूप में उसके ऊपर पेटेंट नहीं लिया जा सकता। तो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो कानूनी तौर पे बहुत ही कमजोर भाषा है, क्योंकि सिर्फ इतना देने से उसमें के उसके बावजूद भी कई सारे कानूनी रास्ते बनते हैं जिसके तहत उन्हें मल्टीलैटरल सिस्टम में से जो बीज लेंगे उसमें से जो कुछ भी उनको जानकारी प्राप्त होगी, जो जेनेटिक सीक्वेंसेस प्राप्त होंगे, उसमें से वो फिर भी अलग तरीके से पेटेंट्स ले ही सकते हैं। थैंक यू। यानी Yeah, you can yes. continue. Yeah. Thank you. Thanks, Sunny. So, intellectual property rights, they can, the language, the text written in the agreement is like, as long as यो बीज है MLS में सभी टाइम, I mean, as long as it is been shared under the MLS, you claim any intellectual property rights. They don't have any problem in giving intellectual property rights on any of the stuff. Basically, the thing is, as long as that particular seed, whichever seed you have given, and that seed is remaining available in the multilateral system, any other researcher can get it, then no problem. So it's not a very clear language which prohibits IPR on resources or beej or seed varieties or anything. Even the plant variety protection can be another right which they can claim, etc., which will happen. Now let us move and see how is this multilateral system under the seed treaty is functioning. Currently, how it is functioning. So currently, this multilateral system covers only a negotiated selection of crops, which means the countries who negotiated this treaty, they came together and decided a certain selected crops, around 64 crops they have selected based on the importance for food security,
as well as interdependence of countries to access genetic diversity. For example, like tapioca, India produces tapioca, but the diversity for tapioca is high in Latin America. So, if tapioca is a good, edible food and it is very contributing to food security in India or other parts of the world, that is one criteria. Second criteria is that tapioca to have access to the genetic diversity for Indian breeders or Indian farmers, they have to rely on Latin America. So that based on this kind of interdependence and food security, they selected 64 crops and created this specific agreement called Seed Treaty or Plant Treaty. This is actually a exception, a certain a specific exception from Convention on Biological Diversity or national ABS laws. So when the 64 crops can be shared for specific purposes, there are 3 purposes mentioned under the treaty: research, breeding, and training for food and agriculture. Essentially, it actually want to say that this crops are only provided to breed new varieties and also training in working with that new bred varieties. That is the only thing they were actually trying to do. But because if you see how the language is written, it can be used for several other purposes. We will discuss that little later. And then what is happening? National authorities like, in India's case, NBPGR or Ministry of Agriculture from any country, they will notify collections available with them for sharing. Now, when they notify collections available with them for sharing, ideally, they should not be notifying the collections contributed by farmers without the knowledge of the farmers. But whether it is happening or not is a different question. As far as we understand, it's not very clear how Ministry of Agriculture from different countries notify these collections. Now, once the Ministry of Agriculture notify this collection is available for sharing under multilateral system, the international gene banks like the ICRISAT or some other gene banks, they come and take it from the national gene banks or national authorities from India. So they use what Tanmay told, standard material transfer agreement. The standard material transfer agreement is what I previously told that decided by the governing body. So this agreement was designed as a standard one, apply for all transfers, whether I take it or you take it or someone else take it. Whoever is taking, it will be same agreement, and that agreement has been developed by governing body. You have a link in the internet. We can show that agreement, that standard agreement. But what is this agreement also saying is that there should not be accession level tracking when you give resources. So when India gives a rice variety to International Gene Bank like IRI, there is no obligation on India's government or on the ICRISAT or in the IRI to keep tracking who got the seeds from them. So they do not have to do that. It need not be, that record need not be, you don't have to attach barcodes into the seed packets or nothing. You don't have to do it at the accession level tracking. Instead, what you have to do is basically every SMTA has to be reported to the governing body, which we will discuss a little later. Now, what is happening is that breeders or researchers can actually go to any of these authorities, like they can go to the national authority, they can go to International Gene Bank and collect these resources. But generally where they go is to international gene banks. So it's, the difference is very huge, that when countries from Asia or Africa altogether, like most of the parties of Africa altogether, has signed around 83 SMTAs so far in the last 20 years. For the seeds from Africa, more than 15,000 agreements have been signed by international gene banks. Same is the case with India also. I mean, Asia regions also. Around 100 and something agreements have been signed by
Asian countries altogether. Around 16,000 agreements have been signed by international gene banks. So the problem here is when the gene banks give the seeds to the breeders, they are not letting our national governments know that these people are taking the seeds. So neither the national authority or the farmer who contributed seed to the MLS do not know that who is taking this seed from International Gene Bank and what sort of research they are doing and what benefits are coming out of it. It's clearly unknown to anybody. So, as I just told, the people who give seeds to the breeders or whoever it is, researchers, they have to periodically report to the governing body of the treaty that we are shared this, these kind of SMTA, these are the SMTAs we have signed. So the governing body knows who have taken the seeds and which seeds they have taken. That list will be available with the governing body. But what has happened is that, providers give this information to the secretariat. Secretariat only gives aggregate numbers to the governing body. So you wouldn't see, as a farmer participating in the Peru meeting or a government entity from India meeting in the Peru meeting or any of the governing body meeting, they will not know which seed company or which researcher, which university has taken the seeds. So there is no public scrutiny or governmental level, backing up or monitoring of who has taken the seeds and what they are doing with the seeds. Completely no information whatsoever to the national authorities or farmers. This is actually against the treaty SMTA. Currently in the treaty says that SMTA has to be reported to the governing body, which means governing body is constituting of all contracting parties. 154 governments come there. And people like, me and Tanmay represent civil society organizations, farmers organization. We all go to governing body. So we should actually know who is taking the seeds from where and what type of seeds they have taken as per the treaty. But the secretariat has not disclosed these information in the governing body. It is only giving numbers. These many agreements have signed, these many seats have been given, these many users have got it, etc. There is nothing more than happening. Now, what is happening because of this? Firstly, I would say there is no benefit. But before that, I want to add one more point. SMTA, this agreement, standard material agreement, as told by the previously, it has to be only for breeding and new variety and sharing it. So it has to be like something of that sort. But generally, because food and agriculture is involved, this purpose is interpreted in a multiple ways, like development of food flavors, development of food ingredients, food processing, like beer, can be produced, or potato chips can be produced using, after taking the seeds from the PGRFA. So this is interpreted in a broad manner, even though original intent was to, or maybe intent was not like that, but originally they were looking at only breeding new seeds and seed sales. So any money which the benefit sharing fund is getting is only from seed companies, not from any other companies like Pepsi or Heineken beer company. Nobody is going to give any benefits to the FAO benefit sharing fund, nor to the governments or the community who have already shared it through the treaty. So even the seed companies, they will share it. They have obliged to share money only when they do not put their new seeds under the multilateral system. So if I am a seed company, I got the seed from the multilateral system, I developed a new variety, and I am putting that new variety also for all of you under the multilateral system. Any one of you can take it from the multilateral system for research and development. In such case, I don't have to share money. So the entire SMTA on access and benefit sharing is imbalanced. On the access level, you can do it for several purposes, like for breeding or developing food flavors or food ingredients or developing food processed food, etc., can be done. But money to the benefit sharing fund only comes from seed sales. This is a big gap in the standard material transfer agreement. Similarly, the standard material transfer agreement
does not speak anything about the sequence information. Saumik ji and Tanmay was talking about sequence information, which is the genetic make of the seeds, like the nucleotides, DNA, RNA of the seeds. That information, what if I, for example, a farmer from Northeast gave a seed to me for breeding or for some research, and I apply the genetic sequencing technology, I got all the sequence information. What am I supposed to do with this information? Should I share the seeds to the rest of the world, or this information to the rest of the world? Or should I use it only for my purpose? Or should I give it back to the farmer? Or, should I give it to only to a database or a, internet website which is managed by the government? So none of these information or guides, what I'm supposed to do with this particular information is mentioned in this agreement. Nothing is there. It's completely silent about it. And what are the recipients like international gene banks are doing? They are generating this sequence information and anonymously giving it. Nobody knows who is taking this information from the gene banks. So, like, you have completely lost the idea of benefit sharing. Anybody, any Tom, Dick, and Harry can take it, but nobody knows who has taken it. So I take it and I do my own research. I make my own product and I do sell the product, etc. Don't tell anybody else, right? So this becomes a big issue. The Europe will say, no, no, no. You, when you make a product and when you want to enter into market, you will have to disclose that from you got this sequence from, etc., etc. But it is very easy in the scientific world to hide this information and sell the product in the market. So without knowing who is receiving this information, etc., etc., anonymous sharing has almost created problems in terms of benefit sharing as well as biopiracy. We don't know who is using what. Digital biopiracy is rampant today. So lack of tracking, accountability, transparency, and public sovereignty, public oversight, multilateral system has failed to generate benefits. As Saumik ji said, 6.6 million seed assistants shared to 25,000 more users. Only 6 have shared benefits to the global fund. Money. Non-monetary benefits, another story. So the benefits are not only lost from the seed treaty, you should also think if this seed treaty was not there, these 64 crops would have been shared through the national ABS system. So it would have been direct engagement between you and the researcher, and you might have been getting benefits out of it. So even that benefits are also not coming. Even the seed treaty benefits are also not coming. This is the situation of benefit sharing. And intellectual property rights. So the international gene banks recently made a study. They said, there are several types of intellectual property rights being taken on seed varieties and traits. But in none of these seed varieties and the intellectual property rights belonging to the 64 crops, there is no disclosure regarding MLS. Like whether they taken it from the MLS, whether it taken it through MLS, none of these mention, there is none of the patent claims or patent protections does not explain that the use of MLS in this. And the farmers are being regularly harassed using such IPRs. So this is how currently the multilateral system of seed treaty is working. Saumik ji, you want to summarize it quickly? Or I go forward? Okay, I think I can go because Soumik has popped out. Yeah. Okay. But you'll have to move back to the first Yes. slide, then to the second slide. Yeah. Thank you. So quickly मैं थोड़ा सा जल्दी से यानी शॉर्ट में बताता हूँ जो नितिन ने कहा कि ये काम कैसे करता है. तो ये 64 फसल है जो ट्रीटी जब 20 साल पहले अस्तित्व में आई, तब बहुत उसके पहले भी 10-1 साल काफी सारी चर्चाएं हुई, मीटिंग्स हुई, और उसमें यह तय किया गया कि ऐसी फसल जो खाद्य सुरक्षा के लिए, अन्न सुरक्षा के लिए जरूरी है, और ऐसी फसलें ऐसे सारे फसल जो जिसमें एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, जैसे कोई टैपियोका भारत में भी उगता है, साबुकंद, और दक्षिण अमेरिका में भी उगता है, और जिसमें एक दूसरे के खाने का भी दोनों भी जगह के लोगों के वो खाद्य सुरक्षा का बहुत अहम हिस्सा है.
और दोनों भी तरफ अगर उसमें अगर शेयरिंग होता है तो दोनों भी जगह उसका फायदा हो सकता है और दोनों भी जगह की खाद्य सुरक्षा सुरक्षितता और आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे कुछ फसल की उन्होंने सूची बनाई जो कि 64 फसल है, जो एनेक्स 1 उसे कहा जाता है, उसके अंदर उन्होंने दिया गया है। तो वो सारी फसल इंटरनेशनली एक पूरा कलेक्शन बना हुआ है जो हर एक देश जो इसके मेंबर्स है उन्हें शेयर करनी है। तो उनके जो नेशनल लेवल के जो जीन बैंक्स होते हैं, जैसे भारत का दिल्ली में एनवीपीजीआर है, तो ऐसे हर एक देश के जो है वो शेयर करते हैं। उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक्स है, जैसे इक्रिसैट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे अलग अलग जो इंटरनेशनल जीन बैंक है, सीजी सेंटर से उनके जीन बैंक्स से भी मल्टीलैटरल सिस्टम का हिस्सा है। अ, ब और इसमें उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मगर बहुत बार क्या होता है कि अ, जो और इसमें किसी को भी अगर बीज लेना है तो उन्हें एक एग्रीमेंट बनाया गया है, वो ओपनली ऑनलाइन अवेलेबल है, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफर एग्रीमेंट। तो उसके शर्तों के तहत वो बीज किसी को भी मिल सकते हैं। और इसमें शर्तें क्या है, तो शर्तें मूलतः ये है कि अगर कोई भी अगर लेता है तो उसका आगे रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे, ब्रीडिंग के लिए के लिए या ट्रेनिंग के लिए। और जब वो इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे रिसर्च के लिए, तो उसमें से अगर कोई फ़ायदा होता है, रिसर्चर अगर कोई ऐसी चीज़ बनाता है जिससे मुनाफ़ा हो सकता है और मुनाफ़ा होगा, तो उसके जो फ़ायदा है वो वापस से ट्रीटी के साथ किस तरीके से उसे बाँटा जाएगा। और उसमें भी ये कहा गया है कि ब ये अ, अगर वो जो बीज इस्तेमाल करके मल्टीलैटरल सिस्टम में से जो बीज लिया है, उससे अगर कोई प्रोडक्ट बनाया गया, अगर वो प्रोडक्ट अगर वापस से फ्रीली अवेलेबल नहीं है, अगर उसके ऊपर पेटेंट लिया जाता है और वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो ही वो एक उनके फ़ायदे के हिस्से का एक छोटा-सा परसेंटेज शेयर करेंगे। नहीं तो अगर वो वापस से सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा, तो उसका फ़ायदा भी उन्हें कंपल्सरी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मगर चीज़ ऐसी हो रही है कि इसका ट्रैकिंग कहीं पे भी नहीं हो रहा है। यानी इंटरनेशनल सीड ट्रीटी का जो सेक्रेटेरिएट है, उनके पास अ, जो कुछ भी अभी तक सीड्स जिस एक्सेस किए गए हैं, एसएमटीए साइन गए, ये सिर्फ नंबर्स है। यानी 6.6 लाख एक्सेशंस हैव बीन यानी एसएमटीएस हैव बीन साइंड या जो कुछ भी है। तो बीज लिए है 25,000 से ज़्यादा एसएमटीए साइन करके। तो ये बस उनके पास नंबर है, मगर किसने कौन-सा बीज लिया, कब लिया, उसका आगे क्या हुआ, ये ट्रेसेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई कि जो मूल देश है, उन तक ये जानकारी पहुँचती नहीं, क्योंकि एक अफ्रीका का उदाहरण दिया, जैसे अफ्रीका के देशों से करीबन सिर्फ 100 ही उनके यहाँ के बीज दुनिया भर में मल्टीलैटरल सिस्टम के तहत ज़रिए लिए गए। मगर वही जो उनके बीच जो इंटरनेशनल सीजी सेंटर्स ने लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीड बैंक्स ने लिए हैं, तो उनके ज़रिए दुनिया भर में 15,000 से भी ज़्यादा एक्सेशंस लिए गए हैं अफ्रीकन सीड्स के। वैसे ही एशिया का भी है। एशिया लेवल अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो सिर्फ 150 वगैरह ही एक्सेशंस है जो देशों के एशिया की में आके रिसर्चर्स ने एक्सेस किया है। तो उसकी जानकारी कम से कम उन देशों के पास है कि भारत के एनवीपीजीआर से किसी ने एसएमटीए साइन करके कुछ लिया, तो हमारे पास जानकारी है। मगर भारत से जो इंटरनेशनल सीड ये सीड बैंक्स में जो गए हैं, तो वहाँ से अगर कोई एक्सेस कर रहा है तो वो जानकारी हम तक नहीं पहुँच रही। हम तक यानी किसानों तक और समूहों तक छोड़ो ही, मगर वो देश तक भी नहीं पहुँच रही है कि एनबीपीजीआर तक भी नहीं पहुँच रही कि उनका बीज जो अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर में अगर दिया है, तो वो किसी ने लिया है कि। और ऐसे जो नंबर्स है, वो 16,000 से भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो चोरी जो हो रही है बीजों की, वो ऐसे हो रही है। और उसके ऊपर जो एक और एक चीज़ हो रही है, वो यानी
हाँ, और एक चीज़ मैंने कहा कि और ये जो है कि अगर बेनिफिट शेयरिंग भी अगर बाय चांस होता है तो वो सिर्फ लागू है बीज कंपनियों के लिए। मगर कोई अगर उसमें जैसे कोई प्रोडक्ट बनाता है डायरेक्टली, अगर कोई इंडस्ट्री है जो बार्ली यूज करके एक बियर बनाती है और वो सीड सेलिंग के मार्केट में नहीं है वो कंपनी, तो वो बस उसका कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे प्रोडक्शन करके बियर बना रही है और उससे से मुनाफा कमा रही है, तो वो उस उनके मुनाफे का हिस्सा फिर मल्टीलैटरल बेनिफिट शेयरिंग फंड को नहीं आएगा। वैसा कोई भी प्रावधान नहीं। या पेप्सिको कंपनी है जो अगर कोई पोटैटो वैरायटी बनाती है और लेज और कोई चिप्स वगैरह डायरेक्टली कॉन्टेक्ट लेवल पे करती है, तो वो फूड प्रोडक्ट्स बनाए, वो बीज नहीं बेच रहे, तो वो डायरेक्टली बाईपास कर सकते हैं बेनिफिट शेयरिंग उनका जो जिम्मेदारी है उससे। और जो है नई चीज़ है ये कि डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, तो डिजिटल चोरी तो बीजों की बहुत बड़े पैमाने में हो रही है, क्योंकि ये सारे जो बीज हम डाल रहे हैं, तो उसके अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग इंटरनेशनल तीन बैंक्स वगैरह सबके प्रोग्राम शुरू है जो उसका डिजिटाइजेशन कर रहे हैं सीक्वेंस डेटा का, और फिर वो एनोनिमसली बिना किसी को पता चले कि कौन ले रहा है कौन नहीं, और उसका बिना ट्रैक रखे लोग ले रहे हैं। यानी ऐसा है कि नितिन ने और हमने एक सीजी सेंटर के एक अधिकारियों से पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि पहले वो ट्रैक रखते थे मगर अभी उन्होंने रखना बंद कर दिया। तो यानी हम और भी डिग्रेडेड सिस्टम की तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे शुरुआत में एटलीस्ट कोई तो ट्रेसेबिलिटी थी, अब वो भी जो कर रहे थे वो भी छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से कितना तो भी एक्सेस हो रहा है, डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सेस हो के उससे मुनाफा कमाया जा रहा है। सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाया जा रहा है, उसके ऊपर पेटेंट्स लिए जा रहे हैं, और ये पेटेंट्स के ज़रिए जिनसे बीज लिए गए हैं उन्हीं समूहों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये पूरा यानी शेयरिंग करके ये सारा अ, इस मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के तहत हो रहा है। नितिन, you Thank can you, Tanmay. Okay, so let's just make it faster. Like there is what happens now is the November meeting. So to the November meeting, the some of the countries or basically the previously governing body has decided to improve the functioning of the multilateral system, and based on which they established a working group. Its name is Ad hoc Open-ended Working Group on the enhancement of multilateral system of access and benefit sharing under planned treaty. So it's a big name, but generally a working group has been established of around 25, 27 countries. And they have been meeting for last several years. And they have now developed a package of measures to improve or so-called improvement of multilateral system. Even that package of measures is not consensus. Like not all the parties, like 25, 27 countries have agreed upon on those measures. But as an outcome of the negotiations with some brackets and some, saying that some parts are agreed, some parts are not agreed, like that, a particular document has been transmitted, which is not yet available in the public domain, but that document will be made publicly available very soon. That document has been sent to this particular meeting, which will happen in Peru in November. Now, this package has got 3 tier of proposals of varying levels of legality. You will see in this itself, there is a clear bias in which this package has been developed. So the first level of proposal is to amend the treaty itself being amended to increase 64 crops to almost all plants. Now, it is binding on all parties. It is fully legally binding on all governments, all who are signing this treaty, right, who are ratifying this amendment. So the first level of legality, it is fully binding. That amendment has been taken up. It increases this particular access in the multilateral system from 64 crops to all plants. There are some nuances here that I will discuss in the next slide. Second level of amendments proposal measure is proposed is amendment to this standard material transfer agreement. Now, this is contractual law. It is not necessarily something legally binding as the parties, as at the level of the treaty, but it is also binding at the contractual level to providers and recipients. Whoever is signing this treaty, for them, it is contractually
applicable. I mean, this particular SMTA contractually becomes applicable. Now, in this SMTA, what have been meaningfully changed to improve, enhance the multilateral system? That's the biggest question. Only thing which they have proposed, which is, I would say, which is different from the existing standard material transfer agreement, is one small change, which says when the breeders, the people who are selling the seeds, there previously it was like, if I am selling the seed and I have made my seed available through the multilateral system, I don't have to share money, profits. Now they have made a simple change that even if I make the seeds available through MLS or available for research and breeding, I will have to make a smaller amount of contribution. Now that smaller amount is actually a discounted amount from the actual money I have to pay when I sell the seeds. So that's the only minor change, meaningful, different from existing SMTA to improve benefit sharing in the proposal. Okay. And then actually there are other proposals which are adding around 3 or 4 um, confidentiality clauses, so that the secretariat, whatever is they are doing now, not telling the information to the governing body, that will be legitimized. I mean, that's not an enhancement thing, so I didn't put it in the slide. That's what they are doing. They are basically legitimizing what the secretariat is doing in violation of the treaty, in violation of the SMTA. Like SMTA, Article 5 is very clear. The recipients, the SMTA has to be reported to the governing body, but nothing comes to the governing body. Article 10 of the treaty is also very clear that MLS has to be operated transparently. But all these provisions, Secretariat has not taken care of. And now there is a proposal in the SMTA to make it legitimized, make it look like good, so that confidentiality clauses are added, which was previously non-existing. Then comes the third level of measures, which is non-binding measures. It is not binding on the parties, not binding on the provider, recipient, etc. And it is in these measures, at least there is some reference to farmers' rights or digital sequence information or intellectual property rights. So you know now essentially that there is a proposal for enhancing MLS, which is so much of bias, so much of unilaterally developed, that only the expansion of the scope of the crops covered under multilateral system is improving. Neither benefit sharing nor other aspects like farmers' rights or digital sequence information or intellectual property rights, etc., has been amended properly. So there is literally no proposal to improve accountability, transparency, governance, or tracking under MLS, or even the compliance with SMTA. So even this change, a small change that a breeder who is making seeds available for researcher and for further research and breeding should also pay some money. Who cares? Because nobody is there to catch. So there is nothing. Even if I just keep selling the seeds and not paying money into the SMTA, nobody is going to come and hold me accountable for it. So this is what they have proposed so far as proposal for enhancement of multilateral system. Tanmay? हाँ, तो नितिन ने अभी शेयर किया कि अभी क्या प्रक्रिया शुरू है। तो पिछले 20 सालों से कुछ भी ट्रीटी में जो इतने सारे 6 लाख से भी अधिक बीज कंपनियों ने, रिसर्चर्स ने लिए हैं और उसके बावजूद कोई भी बेनिफिट आया नहीं, हार्डली कोई बेनिफिट आया है। तो बहुत सारे लोग 10 साल से आवाज उठा रहे थे कि ये इसे बदलना पड़ेगा, इसे और मजबूत करना पड़ेगा। और उसी के बदले में जो दुनिया की जो बड़े यानी उत्तर के देश है, यानी अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, जिन्हें हमसे बीज चाहिए, उनके कंपनियों को बीज चाहिए और प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया कि नहीं यार 64 क्रॉप्स में क्या होता है, इसमें तो मेन क्रॉप्स है ही नहीं, तो बेनिफिट क्या ही देंगे हम आपको, क्योंकि हमें ही फायदा नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई है, एक कमेटी वगैरह बैठी है जिसमें पहली चीज बात की जा रही है कि यूरोपियन, अमेरिकी काफी सारे देश कह रहे हैं कि 64 फसल काफी नहीं है, हमें पूरे जो जैव विविधता है दुनिया की उस पे उसको हमें एक्सेस चाहिए, हमें वो इतने ही आसानी से हमें वो मिलनी चाहिए।
तो पहली चीज वो एक लीगली बाइंडिंग टू ऑल पार्टी, ये एक प्रपोजल है जिसके लिए डिसीजन 1 नवंबर में हो सकता है। कभी भी वो कोशिश करते रहेंगे कि वो निर्णय हो। दूसरा जो है वो एसएमटीए में चेंज है, यानी जो एग्रीमेंट है, अगर बीज लेते हैं तो उन्हें जो एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, तो उसमें और इस तरीके की चीजें लाई जाए जिस वजह से कम कंपलसरी तरीके से पैसा आए, कि अगर आपने लिया है तो ऐसा ना हो पिछले 20 साल में जैसे हो रहा है कि बीज ले जा रहे हैं और कुछ भी आ नहीं रहा है, और कोई भी यानी यानी उसमें ऐसे नियम है कि जिसकी वजह से तुम्हें लेने वाले को और फायदा कमाने वाले को उसका हिस्सेदारी का कंपलसरी तरीके से करने की जरूरत नहीं है। तो उसको उसके ऊपर काम किया जा रहा है, वो सारी छोटी-छोटी चीज़ें हटाई जा रही है, मगर उसमें भी जिस तरीके से पिछले 4-8 सालों में बातचीत हुई है, उसमें ये दिखता है कि इसमें ऊपर भी ये अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ये ऑस्ट्रेलिया, ये सब बिल्कुल भी हिलने के लिए तैयार नहीं कि हम कोई भी कंपल्सरी ऑब्लिगेशन को के लिए सहमत होंगे। और तीसरा है कि एक ओवरऑल मल्टीलैटरल सिस्टम का जो एनवायरनमेंट प्रोसेस है उसमें मोटा-मोटी कुछ बात कही जाएगी जो कानूनी तौर पे लागू नहीं होगी, मगर जिनका एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स जैसे जिसका सम्मान किया या जिसको फॉलो करना चाहिए। यानी क्लियर कट लीगल लैंग्वेज में नहीं होता है, वो होता है उसका ड्राफ्ट रिजोल्यूशन जो बनेगा। तो उसमें क्या किसानों के हकों की बात की जा रही है, उसमें जैविक भौतिक संपदा अधिकार नहीं लिया जाएगा, जो चीज़ वो ले रहे हैं उसी तरीके से। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का अगर इस्तेमाल होता है तो उससे भी होने वाले फ़ायदे को शेयर किया जाएगा। ऐसी मोटा-मोटी बातें कही है, मगर वो किसी भी वो उसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये पूरी कोशिश की जा रही है और की भी उन्होंने कि अभी तक वो उसमें डाला नहीं गया है। तो ये अभी प्रक्रिया चालू है। नितिन, ओवर टू यू। Okay. So I'm not. I think this I will skip. Basically, this is simple that all PGRFA has been discussed, and particularly they say with the government collections. So in a way, it will look like uh, government collections are being covered under multilateral system, but government collections are also made by the contributions of farmers and others. So we have to be very careful about how these collections are developed, etc. They have given some negative list exemption, and there are certain other things which is going around to have this exemption, to delete this exemption. All these things, fights are going on. I'm not going because of time, and we have to discuss further. I'll go to the last part, which is the working group process. What has happened in the working group? So this working group was originally established in 2013, and it did some work for 7 to 6 years and then was suspended in 2019. Then later it was resumed in 2022 when India May governing body happened, and after which there was a checkpoint in 2023 that was also passed. The whole 1 point agenda, there was only single agenda for this working group: how to make multilateral system attractive to commercial seed sector. So the argument which the global north pressed was only around 10 to 13% of the users of the multilateral system is seed companies. So that means seed companies are not very happy to come and take materials from multilateral system. So I was looking at what is this 10-13% of 25,000 users. It's like around 3,000 companies. 3,000 seed companies have already taken, in that sense, uh, uh, materials from multilateral system. I don't know whether these are 3,000 companies or business sectors, X how it is. And seed companies in their presentations, they have also showed around 1,500 SMTs they were talking about. So which means that there are
a good number of seed companies already taking seeds from the multilateral system. But the North kept saying that the multilateral system with 64 crops is not attractive to the companies. So make MLS attractive to the company. So they did two things. One, expand 64 to all crops, then add more confidentiality clauses so that they will never be caught or they will never be held accountable to make payments. There was another important mandate from the governing body to the working group that when you design measures, when you design proposals, you have to take into account how these proposals will affect farmers' rights. Right? That was a clear mandate which was given to the working group. There was no single study, there was no single information document, there was no single agenda item in the working group meetings relating to this issue. There was nothing happened in relating to this issue. There is a simple line in the meeting report which says co-chairs were invited to consider the implications of farmers' rights. Co-chairs considered, and co-chairs say that the measures which they are proposing should not be intended to limit farmers' rights. There is nothing else. There is not even a scientific consideration or a legal consideration or technical consideration of the implications of farmers' rights in developing measures. And as a result, they have proposed this biased draft package of measures, which I showed in the previous slide, 3 levels of measures. And what you see basically is that fundamentally changing the nature of multilateral system. Actually, the multilateral system was essentially designed for small set of crops without tracking, etc., but basic transparency requirement at the governing body level and ensure there is food security. Now that has been completely changed. The transparency is gone. That selected crops idea has changed to all crops. So it's basically changing. And it's basically 25 to 26 countries were deciding or proposing these package of measures. Here again, what is important is to understand that most of the negotiators are, kind of technical officials from Ministry of Agriculture, not necessarily, the people who are, trained from an external affairs background, international affairs background to understand the intricacies going on, many of these negotiations on national sovereignty or farmers' rights. And of course, there has been no consensus on the draft package, but the outcomes are actually going to be submitted to the governing body. One of the sad part is that the last meeting report, there were a lot of proposals from Latin America, Africa, and Asia to change the proposals relating to amending the annex for increasing the expansion of crops, right? This particular proposal, which I was telling. They wanted to change the language. They wanted to provide alternatives, how it can be done, etc., etc. But unfortunately, that part, their alternative proposals are not properly reflecting in this document, which has been shared to the governing body. It has been summarily, as a summary abstract format, it has been written somewhere in the meeting report. So it actually gives a wrong impression to the governing body that most of this 25, 27 countries coming from various regions are okay with sharing, what we call as opening up the annex in a general manner, provided there is an agreement that there is a good benefit sharing happens. What is the good benefit sharing they can have? As far as understand, as far as the studies of the working group concerned, is basically 7 million USD per annum is the best case scenario. If everything goes as per as co-chairs thinking and companies start paying money, what they would get is 7 million USD per annum for the entire plant germplasm. It is not even equivalent to benefits coming out of one single pathogen shared to WHO. This is entire plant germplasm, 7 million annum plus USD. This is how it is there. It is being proposed. So in this context, I have 2 requests to the farmers organizations here. That one is to actually make a clear global demand that the treaty secretariat has to change its practice and publish the critical information to the governing body. Who are the recipients and what seeds they have taken, so that we can exercise public oversight and make these seed companies or whoever is taking multilateral system to share benefits properly, first thing.
And the second thing, we should actually demand rejection of this draft package of measures and ask the governing body to initiate a new process with clear reference, prioritizing farmers' rights, national sovereignty, and governance reforms. I'll stop here. Thank you, Tanmay. तो मैं क्विकली थोड़ा सा कर दूं नितिन कैन यू इसको हाँ तो इसमें जो प्रोसेस है उसमें मेन फोकस जो है कि पूरा एनहांसमेंट प्रोसेस में सारी की सारी फसल उनको इसमें डालनी है। तो इसका जो वर्किंग ग्रुप है जो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी काम कर रहा है, तो उसमें अभी तक इन चीज़ों पे बिल्कुल भी बात नहीं हुई है कि किसानों के अधिकारों के ऊपर इसका क्या असर होगा। ये जो कोई भी तरीका है जो जिसको सुधारने की प्रक्रिया शुरू है इस वर्किंग ग्रुप के ज़रिए कि ये 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 बीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लिया जा सकता है और उससे होने वाला फ़ायदा कैसे लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, ये सारी जो प्रक्रिया है इसको और सुधार कैसे ला सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो नई बनने की प्रक्रिया है उसमें कोई भी चीज़ हर एक चीज़ का किसानों के अधिकारों के ऊपर क्या असर होगा। इसके ऊपर भी इस वर्किंग ग्रुप को काम करना था मगर एक भी बार उसके ऊपर डिस्कशन हुआ नहीं है और बस उस डिस्कशन ना होते हुए बस जो उसके जो को-चेयर्स हैं उन्होंने बस रिपोर्ट में लिख दिया है कि हाँ, हर एक चीज़ के ऊपर हमने ध्यान दिया है और उसका क्या असर होगा इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। इस तरीके से भाषा है तो कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। और उसमें हमेशा से यही बात हो रही है कि ये मल्टीलैटरल सिस्टम बीज कंपनियों के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बने, इसके ऊपर काम करना चाहिए। यही सारी बात हो रही है हुई है अभी तक। अ अ, तो फाइनली जो अ, उम, 2 मुद्दे जो नितिन ने कहे हैं कि जो हमें बहुत ज़रूरी है जिसकी माँग करनी चाहिए, वो है कि अ एक तो है कि हमने सीड ट्रीटी से जो सेक्रेटेरिएट है और अपने राष्ट्रीय गवर्नमेंट से ये माँगना चाहिए कि जो कोई भी बीजों को लेकर इस अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के तहत एग्रीमेंट्स होंगे कि किसने बीज लिया और उसका आगे क्या हुआ। तो ये ट्रांसपेरेंटली ये हर एक देशों तक और हर एक देशों के ज़रिए अपने-अपने किसानों तक ये जानकारी पारदर्शिता के साथ पहुँचनी चाहिए। ये डिमांड हमने सबसे पहली करनी चाहिए ताकि हमें कम से कम पता चले, जानकारी हो कि जो बीज है अपने जो सामूहिक धरोहर है उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रक्रिया पूरी शुरू है उसमें कोई भी चीज़ इस तरीके से उसके यानी जो इस अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के मल्टीलैटरल सिस्टम का जो सुधार की जो प्रक्रिया है उसमें हर एक चीज़ जो अभी तक हुई है वो सिर्फ इसी तरीके से हुई है कि उस सुधार से कंपनियों को कैसे फायदा हो और इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है कि इससे किसानों को क्या मिलेगा और किसानों के हकों के साथ क्या होगा। तो इसलिए हमने पूरी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया का विरोध करना चाहिए। इसको हमारे देशों को कहना चाहिए जो नवंबर में मीटिंग होने वाली है। उसके लिए जो कोई भी भारत से प्रतिनिधि जाएँगे, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जाके वो भारत के किसानों के हकों के लिए इसे रिजेक्ट करें ताकि वो उनका हनन ना हो और पूरी तरीके से एक नई प्रक्रिया शुरू करें जिसमें सबसे पहला जो प्राधान्य दिया जाएगा वो किसानों के अधिकारों को, राष्ट्रीय संप्रभुता को और जिस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है उसमें काफ़ी एक मूलभूत बदलाव होना चाहिए जिसमें पारदर्शिता हो, जिसमें किसान और आदिवासी और स्थानीय समूह का सहभाग होगा। तो ये हमने बात मेन जो कोर है वो ये रखना चाहिए। धन्यवाद Thank you. Sorry. Nitin. Thank you, Nitin, and thank you, Tanmay, for translation. So I will now request Tanmay
who is a farmer and also a seed conservator, and he is part of the Lavaya Campesina, to discuss more on what, because we have already understood what is the current situation and what we should be doing or demands. What actions can be taken by the farmers and the local organizations to stop or prevent or improve all this? Because very few people will actually participate in Peru, so they have to do something at their local levels, and then from local to state to center and then world level. So how, what can they do if we can focus more on that? तो मैं तन्मय जी को आमंत्रण करता हूँ, आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताइए कि अभी ऐसी स्थिति में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं ताकि इस तरह के समझौते, इस तरह के संधि, इनको हम बेहतर बना पाए, या ऐसे जो बातें हो रही है उसको हम लोग रोक पाए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया शौमिक। तीन यानी जैसे शौमिक ने कहा कि सारा कुछ ये ट्रीटी यानी क्या है, ये तो पूरा यानी कवर एक तरीके से हो ही गया है। तो मैं बस कुछ, मुझे लगता है आपका कि 10 वीडियो सेकंड। थोड़ा सा ऑन कर दीजिए तन्मय। हाँ, मेरा वीडियो शुरू है। मेरा वीडियो शुरू है, यानी ओके ओके यार। दिख नहीं रहा है। अच्छा। बस मैं चाहता हूँ कि कोई अगर वहां से ध्रुव या आप कोई अगर एक बस कुछ मुद्दे स्क्रीन के ऊपर शेयर कर पाए, जो मैंने पीडीएफ भेजा है। Yes. ध्रुव कैन यू शेयर? Just one. Yes, I'll just share. हाँ, तो कैसा है, ये सारे जो इंटरनेशनल सीड ट्रीटी है और कोई भी कानून, बहुत बार जिस तरीके से आता है कि कोई भी नीति है कि जनहित में जारी है, ये इसका बारे में बात करना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना वो बेच नहीं पाएंगे। तो वैसे ही इस कानून के साथ हुआ है। ये तो बहुत ही स्पष्ट है जिस तरीके से बातें बताई गई है। तो इसमें जैसे श्रमिक ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि हमें कुछ चीजें खुद को याद दिलाना बहुत जरूरी है। ध्रुव, कैन यू गो टू द नेक्स्ट पेज? तो यानी पहली चीज तो मैं यानी कोई वकील या रिसर्चर नहीं हूँ, बेसिकली खेती करता हूँ यहाँ मध्य भारत में, और कोशिश कर रहे हैं हम कि मिलकर जैव विविधता के साथ कैसे हमारी सबकी जरूरतें पूरी हो, जिसमें से इंसानों के ऊपर फोकस ना हो। थ्रू हम आगे चलते। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें सवाल पूछना कि क्या कोई चीज अगर कानूनी रूप से सही है यानी वो न्यायपूर्ण होती है। ये बस इसलिए मैंने कि मुझे एक आर्टिस्ट एक्टिविस्ट एक आवाज उठा रही है, मगर इसमें ये जो आवाज उठाने की प्रक्रिया है वो इलीगल है, और जो जिस लिए वो आवाज उठा रही है ये उड़ीसा की बारबिल मैंने वो दुनिया की सबसे बड़ी आयरन ओर का लोहा जिसमें है ऐसे माना जाता है, ऐसे खदान है, और वहाँ के पूरे जंगल, वहाँ के स्थानीय समूह पूरे विस्थापित करके पूरा तरोड़ मरोड़ को ये लीगली चालू है। तो यहाँ पे ये पूरी एक जो विरोधाभास है वो दिखाने वाला एक चित्र है कि जहाँ पे जो न्यायपूर्ण चीज है उसके बारे में बात करना कानूनी तौर से गलत हो रहा है, और जो जो गलत काम कर रही है, जो अन्याय कर रही है, ऐसी जो माइन है वो यहाँ पे कानूनी तौर से लीगल है, कानूनी ढंग से चल रही है। तो ये हमें हमेशा ये खुद के ऊपर याद दिलाना बहुत जरूरी है कि कानूनी रूप से सही होना यानी न्यायपूर्ण होना ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट। और ये भाषा बड़ी मजेदार इस्तेमाल करते हैं कि यानी डेवलपमेंट बोलते हुए एक्चुअली डिस्ट्रक्शन होता है, लिबरलाइजेशन कहते हैं, मगर वो सही में किसको लिबरलाइज करा, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट ध्रुव।
तो क्योंकि ऐसी ही भाषा जो फार्मर्स राइट्स वो जब कहते हैं ट्रीटी में, तो सही में उसका मतलब क्या होता है, वो बेनिफिट शेयरिंग जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, इसके लिए ये बिहाइंड द लाइंस जाके समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कानून बने हैं, या फिर हम राइट फ्रॉम ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारा अभी देख ही रहे कि फूड यानी क्या। अ, 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 तो इसको अ, अ, यानी हर एक सवाल को वो डिफाइन करते हैं, तो हमें बताना बहुत जरूरी है कि फूड यानी सिर्फ ये अ, अ, जो अ, अ, मक्का है, गेहूं है, चावल है, बस इतना ही नहीं होता है। तो जैव हम जो करते हैं वो जैव विविधता के साथ जीते हैं, और हमारे फूड में उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और सिर्फ किसान ही उसमें जुड़े हुए नहीं, काफी सारे समूह हैं जो सदियों से किसानी के अलावा भी चीजें करते हैं। तो ये हमारे गांव के कुछ ये सुमनताई है जो यहाँ के जंगलों से बिल्लोरी की के फूल लाते हैं जो सब्जी के रूप में हम खाते हैं। और यहाँ पे हमारे खेत में दाएं तरफ जो है वो एक जंगली क्योंकि हम हल वगैरह कुछ नहीं चलाते, तो जो घासें आती है उसमें से आने वाली एक घास है जिसे जंगली उड़द भी कहते हैं, जो भी खाने का ही एक वाइल्ड ग्रास, वाइल्ड स्पीशीज है जो खाई जाती है। तो ये भी हमें याद दिलाना खुद को जरूरी है। नेक्स्ट ध्रुव। और ये भी इतना ही जरूरी है कि क्या खेती और जो की जा रही है वो सिर्फ उसमें से सिर्फ इंसानों की जरूरत क्या है, बस इतना ही हम सोच के इतना काफी है क्या। तो यहाँ पे उसका एक उदाहरण है कि हमारे खेत में ऐसे सारे एविडेंसेस मिलते रहता है। अलग अलग घासें आती है, मगर वो घासों के ऊपर दिखता है कि किसी टिड्डे की पॉटी मिलती है, कभी किसी कैटरपिलर की पॉटी मिलती है, कैटरपिलर मिलता है। तो अलग अलग घासों से उनका रिश्ता है। तो सिर्फ हमारे बारे में सोच के नहीं चलेगा, प्रकृति के बारे में, प्रकृति में इंसानों के अलावा जो चीजें हैं उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है, और ये बातें रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये कानूनी तौर पे ये जब जब चीजें चलती है, तो वहां पे अगर हमें मौका भी मिलता है अपनी बात कुछ समय के लिए रखने का, तो हमारी भाषा को एक अनपढ़ गवार की भाषा मानी जाती है। क्योंकि हम कानून को कोट नहीं कर सकते, हम जो कुछ भी ये बातें अगर जाके कहेंगे तो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट किया जाएगा, ये स्कोप के बाहर है, ये इस एजेंडा आइटम के स्कोप के बाहर है। मगर हमें पता है कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। जब हम जीते हैं खेतों में, किसान प्रकृति के साथ अनाज पैदा करता है, मगर वो सिर्फ अनाज पैदा करना नहीं होता, उसके साथ कई सारी चीजें, पूरी प्रकृति, हम हमारा खुद का जीवन उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट ध्रुव। तो अंतर्राष्ट्रीय चीजें क्यों जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय इम्पैक्ट। तो एक बस छोटा सा उदाहरण है क्यों हमें, क्योंकि हम बहुत बार इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे क्या चल रहा है वो भूल जाते हैं कि उसका कितना बड़ा असर हमारे स्थानीय रूप में हो सकता है। तो एक थोड़ा सा 16-17 में हमने कंपाइल किया था, मेरे पास लेटेस्ट फिगर नहीं है, पर 2016-17 में अगर देखा जाए तो हम टोटल करीबन 64% हमारा एडिबल ऑयल है वो पाम तेल इंपोर्ट कर रहे थे। और तब एवरेज पाम ऑयल की प्राइस 38 रुपए लीटर थी, और वो उसके बावजूद कि 40% उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लग रही थी। उसमें वो इम्पोर्ट जिस कंपनी से कर रहे हैं उस कंपनी का फायदा, और यहाँ पे आके बेच रहे हैं कोई अदानी की कंपनी होगी, विल्मार होगी, उनका फायदा मुनाफा पकड़ के ये दाम में वो बेच रहे थे। और उसी समय अगर मूंगफली का अगर एमएसपी के साथ कीमत पकड़ी जाए जो कि 42 रुपए 20 पैसे थी, तो तेल अगर प्योर तेल अगर लेना है मूंगफली का, तो 208 रुपए लीटर से वो कम नहीं हो सकता था। यानी अगर पाम तेल को अगर इक्वल फुटिंग पे लाना है यहाँ के स्थानीय उपज से, तो 665% ड्यूटी उसके ऊपर चढ़ाना जरूरी था। मगर क्या भारत के में भारत के पास वो अधिकार था कि जिससे वो है कि जिससे वो 665% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा पाए? तो नहीं है, क्योंकि हमने अंतरराष्ट्रीय कानून एक WTO का हिस्सा है जिसके अंदर हमने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर साइन किया। उसमें एक लिमिट है, हम 300% के ऊपर जा ही नहीं सकते, और कुछ चीजों के लिए 45% ही है अलग अलग से। तो बेसिकली हम जब अंतरराष्ट्रीय कानून का हिस्सा बनते हैं, जैसे शौमिक ने कहा कि हम नहीं नहीं कह सकते, अगर वो हमने अगर अंतरराष्ट्रीय सीड ट्रीटी में कहा है कि हम 64 क्रॉप शेयर करेंगे,
तो हम नहीं कह सकते, वो शेयर करना है। भले ही आज हम पूरा नहीं कर रहे, 64 क्रॉप्स में भी हमारे पास आज हम सिर्फ 28,000 उसके किस्में शेयर कर रहे हैं, मगर हमारे पास 28,000 से भी ज्यादा है। और कल अगर वो सही में हमें अकाउंटेबल पकड़े, अगर वो सही में मांग करे कि हमें ऑडिट करना है हर एक देशों के जीन बैंक का, और उन्होंने शेयर करना चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदार है, तो हमें सारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट ध्रुव। अगली स्लाइड, ये हमने बात कर ली है, इसके आगे चलते हैं। टीटी के बारे में काफी हद तक हमें पता चल गया। आगे चलते हैं। और आगे, और आगे, और आगे, ये पीजे पोर्टल पे दिखता है कितने हमने किए हैं। और आगे क्या क्या किया है। हाँ हाँ, आगे आगे जाते, ये भी इसके ऊपर बात हो गई है। ये भी बात हो गई है, आगे चलते हैं। तो बस, हाँ हाँ, तो बहुत जरूरी, हमारे तरीफ से क्या जरूरी है कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसे राष्ट्रीय संदर्भ में भी ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि चोरी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है ऐसा नहीं है, देश के अंदर भी चोरी हो रही है। यानी आज देश की परिस्थिति देखी जाए तो ज्यादा चोरी तो हमारे हमारी कंपनियां हमसे हमारी लूट कर रही है, कोई मल्टी नेशनल आके उतनी नहीं कर रहा है। तो बीज के संदर्भ में भी वही सच्चाई है, वो हमें ध्यान रखना है कि ये सिर्फ ट्रीटी ही एक मुद्दा नहीं है, मगर ओवरऑल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है हमारे बीजों के ऊपर, और कैसे हमारी लूट और हो रही है और हमारा अधिकारों का हनन हो रहा है। तो हम एक एक करके इस मुद्दे पे जाते हैं कि हमारे बीजों को किसी के भी साथ शेयर करने की परमिशन किसने दिया। तो नेक्स्ट ध्रुव, हम अगले इसमें जाते हैं। हु कंसेंटेड टू शेयर अवर सीड्स। तो ये तो हम है ही नहीं, श्रमिक ने भी इसका जिक्र किया कि ये 1940 से शुरू है, कलेक्शंस करना शुरू है। और कई हद तक अगर हम पूछे, ये सवाल हमें पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो कलेक्शंस है, लाखों के ऊपर बीज है भारत के नेशनल जीन बैंक में, और वो गवर्नमेंट, एनबीपीजीआर के अधिकारी, वो उनका हक मानते हैं कि ये बीज हमारे हैं, ये देश की प्रॉपर्टी है, और देश की प्रॉपर्टी मतलब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वो मानते हैं, और हम इसके साथ जो कानूनी रूप से जो करना है वो निर्णय ले सकते हैं। तो ये सवाल हमें पूछना जरूरी है, ये हमारा हक जताना बहुत जरूरी है, ये बताना कि ऑलरेडी जो सीड्स है वो, उसका एक तो आप प्रूफ बताइए कि पुराने जमाने में किससे आपने लिए। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स में है ही नहीं, मैंने खुद ने कोशिश करी है उनसे पूछने की, जानने की, तो काफी सारे पब्लिक, एटलीस्ट पब्लिक डेटाबेस में कहीं पे भी हमें ये नहीं मिलेगा, ना ही जो रिसर्चर उसके ऊपर काम कर रहे हैं उनसे अगर पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर है, तो वो आपने ओरिजिनली किससे ली थी, वो ये बहुत सारे इसमें उनके पास ईयर लिखा हुआ है कि कौन से साल में उनके पास आई है, और उनके पास ये जानकारी रहती है इन जनरल किस एरिया से वो लाई गई है, मगर किससे लाई गई है, उनकी कोई उन्होंने सम्मति पत्र कुछ है क्या उनके पास जिनसे लिया है उसका, या ऐसे उठा के लेकर आ गए। और शौमिक ने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया जब वो बता रहे थे कि हम बड़े प्यार से किसानों के पास अगर कोई आता है तो जरूर हम बहुत प्यार से दे देते हैं। हमारी तो इच्छा होती है कि कोई अगर आता है तो कोई अधिकारी आए हैं, चलो कोई देखने के लिए आए हैं, क्या दूं और क्या नहीं, ऐसे हो जाता है। तो थोड़ा सा इस प्यार को थोड़ा सा हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि इसके साथ जो हो रहा है वो आगे जाके हमें ही दोषी करार दे रहा है हमारे बीज इस्तेमाल करने के ऊपर। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर बीज जाते हैं तो, यानी जो गए हैं वो हमारे वजह से, यानी हमारे सहमति से नहीं गए हैं। नेक्स्ट, तो ये सवाल बहुत जरूरी कि हु कंसेंटेड। दूसरा है हमारे बीज क्यों लिए जा रहे हैं। तो मैं बस थोड़ा, इसमें तो बाकी तो सारा पता ही है कि कंपनियों को फायदा कमाना है सारे हे करने से, बस यहाँ पे मैं थोड़े नंबर्स बता दूं कि 2023 में जो आपको बुलेट पॉइंट नंबर 4 दिखेगा, उसमें कुछ आंकड़े लिखे कि सीड इंडस्ट्री ने
कितने ग्लोबली बीज बेच के कितना पैसा कमाया। अभी 53,529 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कितने रुपए उसके ऊपर मिलियन, यानी कितने जीरो होते वो तो अपने को नहीं समझता है, मगर ये आपको पता चल सकता है कि अगर देश होता है सीड इंडस्ट्री, तो वो दुनिया का 89वां नंबर उसका लगता है सबसे पैसों वाले देशों में से। यानी ये एशिया के ही देश अगर देखे जाए, कंबोडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, इनसे भी बड़ा देश है ये। तो ये इतनी ताकत रखते हैं कि जो डाइवर्सिटी, और ये बहुत डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है कंबोडिया, नेपाल, भूटान। यानी तुम्हारे पास पैसा है यानी डाइवर्सिटी, ये तो रिश्ता नहीं है, उल्टा बहुत गरीब लोग देशों के पास ही सबसे अच्छी विविधता होती है। तो ये सारा उनके पास है, तो वो बिल्कुल ही मनमानी करवा के उन देशों के कानून में फेरफार कर ही सकते हैं। तो ये बस बताना था कि सही में ये बीज जो है वो ग्रेटर गुड के लिए जा रहे हैं या प्रॉफिटियरिंग के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे अगले इसमें, और इससे क्या हो रहा है ये बीज इससे। तो बेसिकली जो नितिन ने बताया वो बहुत ज़रूरी है कि इसमें से कुछ स्टडीज हुए से क्लियरली दिखता है कि इसमें से पेटेंट लिए जा रहे हैं, इसमें से भौतिक अधिकार लिए जा रहे हैं कंपनियों के जरिए, चाहे वो बीजों के डायरेक्ट बीजों को लेकर हो, यानी बीजों को लेकर कुछ काम किया और उसके ऊपर अधिकार लिया, या उसमें से कोई एक हिस्सा निकाल के, एक तो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, कोई जेनेटिक ट्रेट हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर हो सकता है उसके ऊपर हो, या उसका डिजिटल रूप हो सकता है कि जिसमें उन्होंने ये डायरेक्टली डेटाबेस कहीं से तो एक्सेस किया है और उसको जाके आगे पेटेंट किया है। तो इस तरीके से ये क्या है, भले ही लिखित स्वरूप में जो एसएमटीए की हमने बात करी कि जो लीगली बाइंडिंग है, कोई अगर बीज ले रहे तो उसमें है ये सब, आर्टिकल 23D ट्रीटी में है, आर्टिकल 6.2 एसएमटीए में है, तो ये सारा कहता है, मगर ये पहले काफी क्लियर हो चुका है कि ये बस पेपर पे इसका कोई भी तरीका नहीं है कि इसका ऊपर हम यानी गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रीटी ध्यान रख पाए, फॉलो ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट हम जा सकते हैं अगले स्लाइड में। और हमें क्या मिल रहा है, तो पहली चीज तो थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है मुझे बताना कि जब भी हम ऐसे बैठकों का हिस्सा होते हैं, तो एक बहुत ही एक गंदा, एक घिन लगती है, क्योंकि जो कुछ भी बातें होती है, क्योंकि जो ये सारे कानून बनाने वाले हैं, उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि हम वहां पे बैठे हैं क्योंकि हमें पैसा चाहिए। हमें ऐसे लगता है कि हम क्या कहते हैं कि ऐसे बीजों को लेकर उसका धंधा करने आए हैं कि चलो यहाँ पे नीलामी हो रही है और जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको हम ये बीज दे देंगे, हमारे अधिकार सौंप देंगे। तो ये बहुत ही एक घिनौना पूरा स्वरूप रहता है, क्योंकि सारी भाषा जो है बेनिफिट चाहिए। ध्रुव, कैन वी गो टू अ स्लाइड अर्लियर, द वन प्रीवियस बिफोर दिस स्लाइड। तो ये सारा काफी ही तो ये बहुत जरूरी है कि हम बताएं कि यानी हमारे लिए पैसा क्या मिल रहा है, हम इसके लिए नहीं आए हैं। सबसे पहले है कि न्यायपूर्ण तरीके से चीजें हो, हकों के बारे में बात हो, जैव विविधता की बात हो, तो ये सारी बातें पहले रखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि पैसों की बात करेंगे। और बेनिफिट शेयरिंग यानी पैसा जो है वो हम इसके लिए नहीं मांगेंगे कि आपको हम बीज देंगे इसलिए हमें पैसा चाहिए, मगर आपको पैसा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो कोई भी आपने बीज इस्तेमाल किया है वो आखिर में सदियों पुराने हमारे पूर्वजों की मेहनत है, कलेक्टिव मेहनत है, किसानों की मेहनत है, और उसमें आपने 0.0001 कुछ तो चेंज किया, कुछ कानून बना दिया और उससे ऐसे प्रॉफिट्स कमाए, और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाए, तो उसके जरिए हमारी जो व्यवस्था है, जो एक इनफॉर्मल सिस्टम कहते हैं, वो पूरी तोड़ने की कोशिश की है। तो इसलिए किसान संगठनों की ट्रीटी में पिछले 20 सालों से ये मांग है कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो है ये इसके ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि कोई अगर बीज लेंगे और उसका फायदा होगा तो शेयर करें, ये कोई संबंध ही नहीं है।
अगर बीजों का व्यापार कर रहे हो तो इसका मतलब आप ये जो सामूहिक धरोहर है इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए आपके ऊपर कुछ नियम और पाबंदी लगनी चाहिए और उसका आपने पालन करना चाहिए, और उसमें से जो आप मुनाफा कमा रहे हैं उसका हिस्सा वैसे भी जाना ही चाहिए, जो मूल रूप में आज भी संवर्धन कर रहे हैं उनको वो मिलना चाहिए। तो ये हमारी मांग रही है। तो इसमें मुझे बस आपको एक आखिरी पॉइंट जो है इसी स्लाइड में बुलेट पॉइंट नंबर 5, उसमें बस बताना है कि जो लेटेस्ट जो बेनिफिट शेयरिंग फंड में जो पैसा गया है, तो उसमें कंपनी के ज़रिए जो फंड आया है जिन्होंने ये सब लिया है, वो सिर्फ 2,70,240 डॉलर है। यानी वो उतना उनका 1 साल के टर्नओवर का सिर्फ 0.0005% और ये बेनिफिट शेयरिंग फंड एक्चुअली 2 या 4 साल चलता है, यानी वो एक्चुअली उससे भी कम है, वैसे देखा जाए तो। तो इतना कम अमाउंट देने के बावजूद उनको लग रहा है कि वो बहुत कुछ दे रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद डील नहीं है। तो इसलिए आपके पास आप जो बीज दे रहे हो हमारे साथ सिर्फ 64 फसलें, वो और भी बढ़, तभी जाके वो अट्रैक्टिव बनेगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और वो हमसे लूट कर ही कमाया गया है। ध्रुव, हम आगे जा सकते हैं? ध्रुव, नेक्स्ट। नेक्स्ट, आगे जाते हैं। हाँ, थोड़ा इसके पहले तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीड ट्रीटी में तो नो, द प्रीवियस वन, द वन ऑन फार्मर्स राइट्स, यस, जस्ट यस, ये सो तो इसके पहले जो फार्मर्स राइट्स के बारे में जो स्लाइड थी उसके बारे में बात हो, यानी वो ट्रीटी के अंदर फार्मर्स राइट्स यानी क्या, वो बताया गया है। तो ट्रीटी में कहा गया है कि क्या, द वन बिफोर दिस, यस यस, जस्ट सो तो क्या किसानों का किसान अधिकार यानी क्या, इसके बारे में अलग अलग आर्टिकल्स है जो टीटी में कही गई है, और उसमें बोला गया है कि कोई भी चीज हो तो भी किसानों का जो बीज बचाने का जो अधिकार है, आपस में बांटने का जो अधिकार है, बेचने का जो अधिकार है, इस्तेमाल करने का जो अधिकार है, उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से इस ट्रीटी का इस्तेमाल किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है ट्रीटी में 9.2.c के तहत कि बीजों के बारे में अगर कोई भी बातचीत होती है, अगर निर्णय प्रक्रिया में किसानों का जिन्होंने बीज दिए उनका उनका उनकी हिस्सेदारी होना, उनका सहभाग होना बहुत जरूरी है। तो पार्टिसिपेशन ये एक इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं आएगा। मगर इसमें एक उन्होंने पुच्छ जोड़ दी है कि ये सब लिखने के बाद वो कहते हैं कि दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू नेशनल लॉ एंड एज अप्रोप्रिएट। तो इसका मतलब वो ये निकालते हैं कि हमने इसका मुद्दा बहुत बार निकाला है कि वो कहते हैं कि यानी ये कंपलसरी नहीं है, फार्मर्स राइट्स जो है वो इस ट्रीटी में जो लिखा गया है कि उसका पालन होना चाहिए, इसमें सीधा सीधा लिखा है कि दिस इज सब्जेक्ट टू नेशनल, यानी ये राष्ट्रीय कानून के ऊपर निर्भर है। उस तरीके से आप किसानों के अधिकार यानी क्या और वो कैसे दिए जाएंगे वो आप खुद ले सकते हो। तो इस तरीके से वो उसको उसकी समझ बनाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन वैसे करते हैं। और हमने ये क्लैरिफाई करने के लिए बहुत बार मांग करी है कि नहीं, ये आप एफएओ लीगल टीम के साथ पूछ के इसका लीगल इंटरप्रिटेशन बताइए गवर्निंग बॉडी को, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को, कि इज इट ऑब्लिगेटरी, इज आर्टिकल 9 ऑब्लिगेटरी है या नहीं है, यानी वो पूरी तरह से लागू है कि नहीं। और वो अभी तक उसमें अमेरिका वगैरह नहीं चाहते, तो वो डिमांड आगे नहीं जाने दे रहे। इसके आगे जाते थ्रू, तो इन सब में भारत के संदर्भ में क्या है, तो भारत में हमेशा भारतीय जो कोई भी अधिकारी लोग वहां पे जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो कहते हैं कि अरे हम तो सुरक्षित है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पीपीवीएफआर एक्ट में फार्मर्स राइट्स का प्रोविजन है। तो ये सही में अपने कितने बचा सकता है, तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि फार्मर्स राइट्स पीपीवीएफआर एक्ट हमें
हमारे अधिकारों को हनन होने से नहीं बचा सकता, वो काफी नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप वो आर्टिकल, अगर पीपीएफआरए एक्ट का आर्टिकल 39.1 फोर्थ पार्ट अगर पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा है, और उसमें लिखा है कि ये जो अधिकार है हमारा बीज बचाने का, इस्तेमाल करने का, बोने का, ये सारा जो है वो हमें अधिकार रहेगा किसके लिए? फॉर वैरायटी प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट। यानी जो बीज के ऊपर अधिकार मिला है कंपनी को या किसी इंडिविजुअल को इस कानून के तहत, उसके लिए ही वो अधिकार लागू है। अगर वो किसी पेटेंट के अंडर वगैरह, अगर ये अगर उसका किसी का प्रोटेक्शन लिया गया है, पीपीएफआरए के अंतर्गत नहीं लिया है, तो ये लॉ उसके लिए प्रोटेक्शन गारंटी नहीं करता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी कानूनी व्यवस्था में हमारे हकों को बस ये एक कानून में बस हमने नाम में क्या लिख दिया कि ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज और फार्मर्स राइट्स एक्ट है, तो हमारे पास फार्मर्स राइट्स है। तो ये जो है इसकी पोल खोलना बहुत जरूरी है कि इससे हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और किसान अधिकार यानी सिर्फ बीजों का इस्तेमाल करना इतना ही नहीं होता। किसान अधिकार इससे भी काफी सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। तो वो सारी चीजें भी हमें हमारे हक जताना बहुत जरूरी है, बोलना बहुत जरूरी है। यानी ये भी हमारा हक है कि सीड ट्रीटी के तहत हमसे कौन से बीज शेयर किए जा रहे हैं, हाँ, यानी देश के बाहर कौन कौन या देश के अंदर कौन कौन हमारे बीज इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये जानना भी हमारा हक है। तो फार्मर्स राइट्स ये बहुत बड़ा एक स्वरूप है उसका, सिर्फ इस तक मर्यादित नहीं। नेक्स्ट ध्रुव, कैन वी गो फॉरवर्ड प्लीज? हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डीएसआई, जैसे इसके ऊपर बात हो चुकी है कि अभी बीज हाथ में रहने की जरूरत नहीं है, और नितिन ने क्लैरिफाई भी किया कि सिर्फ उनको सीक्वेंस डेटा मिल गया तो ही काफी नहीं है, तो उनको किसानों के पास आना ही पड़ेगा और उसकी जानकारी लेनी ही पड़ेगी। और वो जानकारी लेकर ही फिर वो उसके ऊपर आगे काम कर सकते हैं। मगर अभी के लिए वो एक बहुत बड़ा कदम है कि डीएसआई भी उनके पास आ गया, जो कि एक्सेसिबल है, तो वो काफी सारी चीजें उसके साथ कर सकते हैं। और एआई वगैरह की मदद से तो आजकल काफी सारी ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन भी, नॉलेज इंटरनेट पे अवेलेबल है, और जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो तो यानी उनके पास टूल्स है कि वो क्रॉस वेरीफाई, कनेक्शन, वो क्रॉस रेफरेंसिंग करके वो जानकारी को कनेक्ट करके उसका अर्थ निकाल पाए। तो सही में हम यानी जिनके पास इसका पारंपरिक ज्ञान है वो इररिलेवेंट होने में समय नहीं लगेगा, काफी हद तक इररिलेवेंट हो भी गए हैं, ये मेरा मानना है। और वो आगे होते ही और भी हो जाएंगे, तो बीजों का जरूरत नहीं पड़ेगी उनको, अभी जो फ्रीली अवेलेबल है उसके जरिए भी कर सकते हैं। और ये जो ऐसे कानून है दुनिया में जिसमें अगर उन्होंने एक आधा डेटा सीक्वेंस उनको मिला कि ये कोई फल लिए, जैसे हमारे खेत में हम तलवार शेंग इस्तेमाल करते हैं, हमारे अभी कम हो गई है वो, पूरे इलाके में ज़्यादा लोग नहीं लगाते हैं, मगर स्वर्ड बीन जो होती है, तो हमने देखा है कि बीन्स कैटेगरी में कभी एक आधा साल ऐसा आता है कि जब वायरस अटैक बहुत होता है, और हमने देखा है कि ये जो स्वर्ड बीन है उसके ऊपर बाकी के फलियों के कंपैरिजन में, बाकी के जो यानी वाल रहती है, पोपट रहती है, इसके कंपैरिजन में तलवार शेंग पे बहुत कम वायरस आता है। तो एक बहुत अच्छा वो स्टडी चीज़ हमें उसका एक प्रॉपर्टी दिखता है। अभी वो टेक्निकली कितना सही है नहीं है, उसका जेनेटिक रिलेवेंस है कि नहीं, हमें नहीं पता, मगर उदाहरण के तौर पे अगर ये भी डेटा उनके पास अगर डिजिटल फॉर्म में भी उनको पास सीक्वेंस है और इस बारे में कहीं पे डाला है, तो उनके पास टूल्स है कि वो कनेक्ट करके उसके ऊपर पेटेंट ले। और यूरोप में तो ऐसा कानून है कि तो वो इसके ऊपर पेटेंट ले सकते हैं कि वायरस से लड़ाई करने वाली क्षमता रखने वाला जो कैरेक्टर है, उसका जो डेटा है, उस पर किसी कंपनी का अधिकार है। और फिर वो जाके फिर सिर्फ वाल फल्ली पे नहीं, तो वो अगर कैरेक्टर अगर उन्हें तलवार शिंग में ही नहीं, अगर वो दूसरे पोपट में भी अगर उन्हें दिखता है, वाल में भी दिखता है, तो वो मुझे आके मेरे से रोक लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि ये इसका जो डेटा और जानकारी है उसके ऊपर मेरा पेटेंट है, तो यह बीज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारे परमिशन के बिना, क्योंकि उसके अंदर जो
जो कैरेक्टर वो दिखा रहा है वायरस से लड़ने का, वो कैरेक्टर की जो जानकारी है वो हमारे अधिकार की। तो ये ऐसा कानून है, और ये यानी ये बहुत ही कल्पना लगेगी, मगर ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया है, और ये 1998 से लागू है। यूरोप 20 से ज्यादा देशों में है यूरोप के। तो वो हम तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा, ऐसे सारे मनगढ़ंत कानून। नेक्स्ट हम जा सकते हैं ध्रुव। ये इंडिया में हो रहा है, जो चोरी की बात करें डिजिटल रूप में, तो ये बस एक न्यूज आर्टिकल है कि इक्रिसैट जो इंटरनेशनल सेंटर है सीड बैंक है, वो उसका हेड ऑफिस हैदराबाद में, और इसमें पूरा वहां पे जो कोई भी बीज है उन सारे का अगर बुलेट पॉइंट 2 में अगर आप देखें, द एम इज टू प्रोवाइड a common and scalable sequence data analysis platform and a community focal point for researchers primarily generating sequencing data फॉर यूटिलाइजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो हमारे जो सारे जो मिलेट्स वगैरह है वो इक्रिसैट में है, यानी नेशनल जीन बैंक में है, फिर नेशनल जीन बैंक से एनबीपीजीआर से वो सारे ऑलमोस्ट इक्रिसैट में है ही मौजूद। और वहाँ पे वो एक ड्यूसिक प्रोग्राम के साथ वो काम कर रहे हैं, जो ड्यूसिक इंटरनेशनल बेस्ड इन यूएसए है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो यही करता है कि डाइवर्सिटी खोजता है, और किस जरिए, तो सारे का सारा उनका यही काम चल के दुनिया भर के जितने बीज है उसका उसका सीक्वेंस डेटा को डिजिटल फॉर्म में करे, और वो पब्लिकली सारों को अवेलेबल कराए। और सिर्फ पब्लिकली सारों को ऐसे अवेलेबल नहीं कराए, तो उसके ऊपर काम भी करते कि उससे ज्यादा से ज्यादा इस रूप में डाले कि उसमें ये पारंपरिक ज्ञान भी जुड़ा हुआ हो, यानी कोई भी रिसर्चर सर्च करके ट्रेड सर्च करके वो डायरेक्ट वो सीक्वेंस कौन सा है, वो डेटा कौन सा सीक्वेंस ये जान पाए, इसके ऊपर भी वो एनहांसमेंट का काम कर रहा है। और ये सब हमारे को कुछ भी पता नहीं है, तो ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे जो नहीं है, तो भारत के अंदर हो रहा है। और अगर आप थर्ड बुलेट पॉइंट में देखें कि इसके ऊपर कौन काम कर रहा है, तो डॉक्टर राजीव वास ने एक रिसर्च इंडिया, या फिर डॉक्टर कुलदीप सिंह, ये हमारे एनबीपीजीआर के डायरेक्टर रह चुके हैं, डॉक्टर कुलदीप सिंह, और कविता जी और अलग अलग लोग इन्हें अच्छे से जानते हैं ये सारे नाम। तो इस तरीके से देश के अंदर भी हो रहा है, यानी इसका तो ट्रीटी से कोई संबंध भी नहीं है। ट्रीटी नहीं भी होती तो भी ये काम चालू रहता, और ट्रीटी है तो भी ये काम चालू है, और ट्रीटी के तहत इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही है। तो एनीवे, तो अपन नेक्स्ट इसमें जाते हैं। नेक्स्ट ध्रुव, हाँ एक पीछे जाना, एक स्लाइड पीछे प्लीज, one slide before. So this is happening. DSI further concerns. This is happening at national level as well. No, the next slide do. The DSI further concern. तो मेन मुद्दा है कि हमें ये बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि हम कह रहे हैं कि डीएसआई एक्सेस को फिजिकल एक्सेस माना जाए, उस तरीके के ऑब्लिगेशंस उसको फॉलो करने पड़ेंगे, उस तरीके का रेगुलेशन उसका होगा। मगर हमें ये सवाल भी उठाना बहुत जरूरी है कि सही में ये सारी टेक्नोलॉजी हमें आज चाहिए क्या, सही में फूड सिक्योरिटी के लिए उसकी जरूरत है क्या, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम बेस जो कोर सवाल है, हम इतने उससे दूर हो गए हैं, इतने काल्पनिक परिस्थिति को सच मान के जी रहे हैं कि हम कोर सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। तो हमें बार बार वो सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है कि सही में इसकी क्या जरूरत है। जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है, ये हमेशा पूछते हैं, वैसे ही इसकी क्या जरूरत है, सही में इनोवेशन के लिए पेटेंट्स की जरूरत है क्या, क्या जरूरत है। कंसेप्ट और कंसेप्ट ऑफ पेटेंट को ही, उस प्रिंसिपल को ही क्वेश्चन करना बहुत है, उसके ऊपर सवाल उठाना। नेक्स्ट वी कैन स्किप दिस स्लाइड। ये सारी काफी सारे बात हो गई है। नेक्स्ट हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, कैन वी जस्ट गो टू दैट स्लाइड, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड। हाँ, तो ये आखिरी के पहले की स्लाइड है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। हाउ डू वी रिस्पॉन्ड, तो ये कुछ तरीके हैं कि हम इसके लिए रिस्पॉन्ड करें। तो सबसे पहली चीज है कि हम इसके बारे में बात करें, हम इसके बारे में आपस में बात करें। कोई भी हमारी मीटिंग हो, शादी हमारी, हमारा गांव स्तर पे बीजोत्सव होता है, हम कुछ लोग इकट्ठा होते, गांव के महिलाएं और सब जिनके पास बीज है, इकट्ठा होते हैं और बीजों के बारे में आदान प्रदान होता है, बातचीत हुई। मगर वैसे भी छोटी मीटिंग रही तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये सारी चीजों के बारे में बात करें।
कि बीजों का हो क्या रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल सीड ट्रीटी यानी क्या है, NBPGR क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया क्या है, तो ये हम बात करें। दूसरा है कि हम हमारे जो बीज जो हमारे गवर्नमेंट के नेशनल लेवल पे भी जो सीड बैंक्स में है, MLS में तो है ही, उसके बारे में तो सवाल पूछना ही चाहिए, मगर इवन जो नेशनल जीन बैंक्स में जो हमारे बीज है उसके ऊपर सवाल उठाना बहुत जरूरी है, हमारे हक जताना बहुत जरूरी है कि ये हमारे बीज है, आपने किससे लिए, कब लिए, और आप इसके आगे क्या करते हो, किस किस के साथ है, ये सारे सवाल हमें पूछना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, यानी यानी ये तो अभी आज यानी मुझे लगता है काफी सारा समय, तो एक एक मुद्दे पे अगर हम क्या कर सकते हैं बात करने जाए तो हम काफी हद तक एक कलेक्टिव चर्चा का मुद्दा है, यानी मैं सिर्फ बोलूँ कि क्या ये कर सकते हैं, ये सही नहीं रहेगा। पर एक ब्रॉडली बस ये बता रहे हैं कि यानी हमें हमारा हक जताना पड़ेगा कि बीजों के बारे में कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, हमें रहना बहुत जरूरी है, ये हमारा हक है। और हम हमारे बीच अभी कोई भी हो, यानी PPVFR अथॉरिटी से अगर कोई आए और कहे कि हम आपको जेनोम सेवियर अवार्ड देते हैं, या फिर आइए आप आपकी वैरायटी रजिस्टर कीजिए, आपको उसका मुनाफा होगा, आपका उसका फायदा होगा, ये सारी बातों में, ये सब जाल में हमने फंसना नहीं चाहिए। हमारे बीच हमारा अधिकार, और हमारा अधिकार यानी किसी का, यानी हम जाके कल जाके पेटेंट ले, ये भी सही नहीं है। हमारा अधिकार जब हम बात करते हैं तो एक कलेक्टिव राइट्स, जिसमें हमारा एक प्रॉफिट मेकिंग वाला अधिकार नहीं है, मगर एक अधिकार है जिसमें हम सस्टेनेबली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये सारा समझ के हम आपस में बात करें और ये बात आगे करते रहे। और बहुत बहुत शुक्रिया शो में थ्रू ये सारा पॉसिबल करने के लिए। और मुझे लगता है हम सब मिलके आगे यानी ये काम को ले जाना पड़ेगा। शुक्रिया। धन्यवाद तन्मय एंड थैंक यू नितिन। आप लोगों ने विस्तृत रूप से बताया। तो अभी काफी सारा टाइम हो गया है, एक्चुअली विषय ही काफी बड़ा है, तो इसीलिए सो इन द एंड वी we have understood or tried to understand that the situation of the seed treaty is very poor, I would say, because there is nothing for farmers there. It is all for big corporations and governments and such bodies. So we have to raise our voice. We have to put our issues in front of the people who are going there or who can influence such policies. So you have to influence your local government person, your political representatives, your bureaucrats, and you have to explain them, because maybe they also don't know. They have not gone through all these things and they are not aware. So maybe you can explain them. You can. This program was made so that you can have many more local programs. So in your states, you can have such local programs in local language, involve local farmers, explain them, and then invite your political or other type of community leaders and farmer leaders, biodiversity boards, and government officials, agriculture university people, and try to tell them that maybe what they are thinking is very good and wonderful, may have a lot of loopholes, and there are areas where we need to bring in and intervene to stop this biopiracy. तो हम लोगों को लोकल जितने लोग हैं, हमारे राजनीतिक लोग हो या हमारे सामुदायिक समाज के जो लीडर्स थे उनको, या हमारे सरकारी ऑफिसर्स हो, इनको हमको बताना है, क्योंकि वो लोग भी कई बार जानते नहीं होते, इतनी चीजें उनको भी मालूम नहीं रहता है। तो इसको लेके अगर हम लोग लेटर लिखे, पिटिशंस करें, लोगों को जानकारी दे, अवेयरनेस करें, पोस्टर्स बनाए, इस तरह के वेबिनार्स करें लोकल लैंग्वेजेस में, और ये चीजें और लोगों तक पहुंचेगी। और कोई भी आए और आपको आपसे बीज मांग के
चले जाए नहीं, आपको आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपको अवार्ड दिला देंगे। ये सब चीजें थोड़ा इस पे हमें गहराई पे सोचनी चाहिए कि वाकई में ये रजिस्ट्रेशन, ये अवार्ड और इन सब से कुछ फायदा हो रहा है या उससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए कि ये जो पुरखौती बीज है, ये पारंपरिक, जो पता नहीं कब किसने 1000 साल पहले किसने इसको डेवलप किया, और उसके ऊपर हम हक जताने वाले कौन लोग होते हैं? हमारी पूरी कम्युनिटी या पूरी जो एरिया है उसका उस पे अधिकार है, ना कि किसी एक व्यक्ति का और एक ग्रुप ऑफ पीपल का। So we have to question all these things. We have to question seed registration. We have to question the gene savior awards, the way the seeds are being taken, and for what purpose, and only for private gain. When the seed has not been developed by you, you are just a trustee of the seed from the long series of generations who have worked on and conserved and loved that seed. So why only credit one person or a small group of person? So all these things have to be gone into the details, and I will share more things in the WhatsApp group, because there is, I mean, we have exceeded the time, and so we can write letters. In the end, you had seen Nitin had posted that slide where we had been asking for the demands. Demands is that we cannot change the old treaty of the 64 crops, but we can demand that what is happening with the 64 crops, who are taking, what are they doing? We don't have information. So all that we can ask, and we can and for the new one, we can simply reject it, that we don't want expansion of Annex 1 without the farmers, ensuring farmers' rights, without ensuring that the all the provisions and the loopholes are plugged, and without that we don't want to increase anything. In fact, we want to find out more details of what has already been given. There is no question of expansion. So we have to put that thing with our policymakers and people who can influence and who can take decisions, that we are not party to it, we are not agreeable to such conditions, because ultimately they will not suffer, the farmers will suffer, you will lose your biodiversity, you will lose your rights, and you will have restrictions in doing what you are doing now. So that is the main idea, and I hope that we have been able to give you some information. Dhruv, can you open up for any questions and queries that this webinar it would probably inspire you to do some things at your own level. Maybe start a webinar or a small discussions in your group to start with, and write letters asking that we don't want this. Yeah, thank you. If there are any comments, questions, or queries to any on anything, we can address that now.